A very good evening, everyone. On behalf of Vital Biotech and Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, AFTEFS, I, Dr. Krishnan Singh Nama, cordially welcome you all the third day of this 3-day international training cum workshop program on agripreneurship opportunities and current challenges. This program is jointly being organized by Vital Biotech and Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, AFTEFS. Vital Biotech is India's leading publication, research and training institute, whose goal is to tackle the world's most pressing problem which related to food and agriculture. In order to achieve these, it is actively involved in the creation of manufacture and microbiological and biotechnological substances and molecules, gaining respect both domestically and globally in the field of scientific publication. The aim of Vital Biotech is to publish top-notch progressive peer-reviewed research articles, whereas Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society serves as a spiracle between the network of rural communities in India and other stakeholders, such as the government, development organizations, and corporate entities. It is a spherical organization of agricultural professionals and related sectors in India. It provides a common platform for various agriculture professionals like professor, associate professor, assistant professors, PhD scholars, students, mystics, experts, and researchers taking in various scientific institutions across the India and abroad. I would also like to announce that our knowledge partners of this program are Chaudhry Charan Singh Haryana Agriculture University Hisar, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya Jabalpur, CSIR Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants CIMAP, Lucknow, Central Agricultural University Imphal, University of Sri Jayawardhanepura Sri Lanka, and Agrosphere e-newsletter. Also, I congratulate the entire organizing team for organizing the insightful training program. Today, we are highly privileged to have such an honorable dignitaries among us. First guest of third day is Dr. S.P. Vista. Before inviting Sir to deliver his talk, I would like to briefly introduce Sir to our participants. Dr. Vista is Chief of National Soil Science Research Center, NARC, Nepal. He coordinates overall soil science research in Nepal. Dr. Vista has done MSc and PhD in agriculture chemistry and soil science from Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpura, West Bengal, India. He is an expert in digital soil mapping, soil fertility and nutrient management, soil pollution and environment, soil organic matter, soil carbon, soil health management, biochar production and management. Dr. Vista has published more than 75 scientific papers, 19 book chapters, 11 books, and he is member of editorial board of 13 journals. Dr. Vista is also adjunct professor of Himalayan College of Agricultural Science and Technology, Purbanchal University, Nepal, and Institute of Agriculture and Animal Science, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal. Dr. Vista is international visiting professor at Shobhit University, Meerut, India. He is the focal person at Nepal Seed and Fertilizer Project, USAID funded and implemented throughout CIMMYT Nepal. Sir is General Secretary and life member, Nepalese Society of Soil Sciences. Dr. Vista is Regional Coordinator of Asia Impact Youth Sustainability, Coordinator, International Association for Promoting Geothics Nepal Section. Sir is also life member of Society of Agricultural Scientists, Nepal. Sir is an awardee of Global Science Scientist Award, Outstanding Principal Investigator Award, and many more. Sir, we are honored to have you on board. Now over to you, sir. The hall is yours. Please welcome Dr. Vista.
Uh, Thank you, Dr. Krishnendra, for your nice introduction. I think I do not need to say more than that. So, as I'm a soil scientist, I work for Nepal Agriculture Research Council, and from the last 20 years, I have been working in Nepal Agriculture Research Council, and now I'm the chief of National Soil Science Research Center. Anyway, today I'll be delivering about soil as a means or to mitigate global challenges. What are the global? I'll be talking about the key global challenges and how soil can help to mitigate those challenges. So I'll directly go to the presentation. So is it visible, my slides? Yes, sir. Yes. Then Sir, please get it in full mode, full screen mode. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. is it okay? Yes, sir. It's fine. So I'll be talking on soil as a solution of global challenges. We have so many global challenges, and soil is one of the component that helps to mitigate those global challenges. So this year, we have World Soil Day. We celebrate it on December 5 every year. And this year, the theme of the global World Soil Day is soil and water, a source of life. Just this is what I wanted to show. Now I'll be talking more on what are the global challenges we have. Climate change, one of the key global challenges. Climate change, everybody knows about it, but still uh, rising global temperatures, extreme weather events, sea level rise, and disruption to ecosystems are some of the consequences of climate change. And reducing greenhouse gas emission and adapting to the changing climate are very much critical these days. So the another one is environmental degradation, deforestation, soil erosion, loss of biodiversity, and pollution of the air, water, soil pollution. These are some of the have significant environmental challenges that affect ecosystem, human health, and overall well-being of the planet. Another global challenge is poverty and inequality. Economic disparity between and within the countries continue to be the major global challenge. So this has to be addressed. Another is global health crisis, which infectious disease is highlighted by the COVID-19 pandemic, pose threat to global health security. Malnutrition is also another challenge. So we have so many global health crises everywhere, and access to health care, disease prevention, and preparedness for pandemic are ongoing challenges. Another challenge is food insecurity. Despite advances in agriculture, a significant portion of global population faces food insecurity. Challenges include unequal distribution of resources, climate change impacts on agriculture, and access to nutritional foods. And another is water scarcity. Water scarcity, the availability of clean and safe water is a pressing issue in many regions. Water scarcity is exacerbated by climate change, pollution, and inefficient water management practices. So biodiversity threats is also another challenge. So biodiversity losses due to climate change or invasive weeds and microbes, etc., are some of the other challenges. So there are other challenges like energy crisis. We have, we do have energy crisis all over the world. Besides this, there are other challenges like cyber security threats, political instability and conflict, migration and displacement, like technological disruptions, nuclear proliferations, etc. These are some of the other challenges. All these challenges are all interconnected, and addressing them often requires international cooperation, innovative solutions, and sustained effort from governments, business, and civil society. It is also important to note that the global landscape is dynamic and new challenges may even
emerge over time. Soil as a means. Soil, everybody knows that soil is the foundation for all forms of life on earth. There is no life without soil and no soil without life. So it goes together. Soil is life and life is soil. We just say like that. So because for healthy life, we need healthy soil, healthy water, healthy air, and this all leads to healthy life. All in every countries, the constitution uh, have the right. Every citizen has the right for good environment. Good environment, it comprises of healthy soil, healthy water, clean air. These constitutes of healthy environment. So the every almost all the countries have, in the constitution it is written that every citizen should have healthy environment. So we all have the that right, and I say that healthy soil is a human right. So we can't imagine any civilization without healthy soil, because soil is the foundation of all life, and is also the foundation for agriculture, for industries, for everything, for economy. So healthy soil, also we know that we have 17 sustainable development goals, and out of 17 sustainable development goals, healthy soil contributes directly to 8 sustainable development goals and indirectly 5. So altogether 13 sustainable development goals are contributed through healthy soils. So we say that global, soil is central to all the global challenges. And I just wanted to show that what is the role of soil in addressing those challenges, global challenges. Soil is very much crucial in addressing, several global challenges. I'm just talking about some of the challenges where we hear some soils can be a solution. So climate change mitigation is one of the options, where I just wanted to focus on carbon sequestration. Healthy soils act as a carbon sink, sequestering carbon dioxide from the atmosphere. Practices such as agroforestry, cover cropping, and no-till farming, or conservation tillage, can enhance soil carbon storage, and it can help in mitigating the climate change. Another issue is biodiversity conservation. We all know that soil is the habitat for microorganisms. Soil is home to all the diverse range of microorganisms, including bacteria, fungi, and nematodes. These microorganisms play a vital role in nutrient cycling and maintaining the soil health. Soil is habitat for all, not only for the microorganisms, but without soil, we cannot imagine any form of life on earth. Even human being, without soil, we cannot imagine any form of life cannot be imagined without soil, because first form of life, it originated from soil. If there is soil, even when when human visit moon or other somewhere, then they first go and collect the soil samples, and they study whether life can exist there or not. So it is the soil that gives habitat for all. So water conservation is another, where I just wanted to focus on water filtration. Soil act as a natural filters, everybody knows, where it removes pollutants and impurities from water as it passes through the soil. Protecting and maintaining soil health contributes to clean and safe water resources, where is a very issue of water crisis. So soil is also, act as it has a good role in food security, especially in nutrient cycling. Healthy soil, if the healthy soil is there, it supports nutrient cycling, providing essential elements for the plant growth. Sustainable agricultural practices such as crop rotation and organic farming can also help maintaining soil fertility, ensuring long-term food security. So another
Role of soil is land degradation prevention, where especially I wanted to focus on erosion control. Soil erosion is a significant global challenge. Vegetative cover and conservation practices can help prevent soil erosion, preserving arable land and reducing the loss of fertile topsoil. Water management is also another uh, uh, another aspect where we can think of, and especially on retention and drainage. If we have a good soil, then it can retain more water. If a soil has good organic matter content, then it retains more water. If the texture, it depends upon, even with the texture, well textured soil can retain water during dry spells or during dry periods, and facilitates drainage during heavy rainfall, contributing to effective water management in agriculture and reducing the risks of flood and drought. So another one is renewable energy, where we focus more on bioenergy production. Bioenergy production, certain crops such as switchgrass, miscanthus can be grown on marginal lands to produce bioenergy, providing a renewable source of energy without competing with the food crops. In Nepal, even in India, jatropha is also very much popular. Generally, jatropha plantation is done for biodiesel extraction for bioenergy production. So another aspect is waste management, composting, especially. Soil can be a part of the waste management strategies through composting. Composting organic waste enhances soil fertility and structure while reducing the need for chemical fertilizers. There are other like medicinal resources where the microbials and fungal products can be used. Soil is very much, as I said, is a rich source of microorganisms and fungi that produce antibiotics and other medicinal compounds. Studying soil biodiversity can lead to the discovery of new pharmaceuticals. This is what I wanted to focus. And, we must also have community development, especially the local agriculture. We must encourage them. Encouraging a sustainable and regenerative agricultural practices at the community level that can enhance local food production, improve the livelihoods of the people, and strengthen resilience to environmental changes. These are some of the role of soil where I wanted to focus in addressing some of the global challenges, where these are some of the points where I wanted to highlight. So soil as a means, or as a solution for the global challenge. Here, just I wanted to show that soil is central to all the global challenges. These are some of the like food security, energy sustainability, ecosystems, service delivery, biodiversity protection, climate change, water security. These are some of the global challenges, and you see the soil is at the center. So all those problems, challenges can be met if the soil is very good, is the soil is healthy. So like if soil is healthy, then it directly contribute to the food security, because healthy soil produces healthy foods, more production. So it directly helps in soil food security, because 95% of the food comes from soil. And water security, as I said, soil is the natural filter. 99.9% of the water what we consume and use comes from the soil itself, because it recharges through recharge. So it filters the soil. If the soil is not healthy enough, it cannot filter, and even the water that we recharge from ground, what we collect, cannot be used even for the irrigation purpose, also for agriculture also, not only So climate change, as I said, is carbon sequestration. Soil is the carbon sink, and around 2/3 of the global carbon is sequestered by the soil. Biodiversity is, as I said, microbes is the habitat for all. Even one spoonful of soil, it contains more number of microbes number than the population of the world. So it habitates, it harbors millions, zillions of
microbes. So if the soil is healthy, in that case, the biodiversity protection, biodiversity can be enhanced. So this all things is possible only when soil is healthy and if the soil is secure. So soil security comes first. If the soil is, soil security is nothing but it is the either maintenance or improvement of the soil quality, soil, productive capacity. So soil should be healthy so that all the global challenges can be, we can we can combat or mitigate those global challenges. This is what I wanted to highlight in this in my presentation. So in order to, as I said, these are some of the issues where we just wanted to share with you. So soil is one of the plays a very crucial role in addressing these global challenges. And as I said, in order to maximize the positive impact of soil as a solution to global challenges, it is very much essential to adopt sustainable land management practices. Also, to promote the conservation efforts and raise awareness about the importance of soil health among the policymakers, farmers, and the general public. So we should always raise awareness about the soil health, healthy soil that contributes to most of the global challenges, to mitigate those global challenges. And now soil has come as a means to mitigate those global challenges, and we must always continue to advocate about it. So healthy soil it comes first. And just I wanted to share that there are no passengers in the space of earth. We are all crew. So everyone, all of us are equally responsible either to destroy or to maintain the soil health. So we are all responsible. So let's join hand together to keep our soil healthy and sustainable. This is what I wanted to share in my presentation. Thank you very much. If you have some questions, I can answer you. So this is what I wanted to share with you. Thank you very much. Back to you, Dr. Krishnendu. Dr. Krishnendra Singh. Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Back to you. I think I finished within short time. No Anyway, problem, this sir. is what I wanted to share. I don't want to go deeper. And anyway, this is a message that soil can be one of the important, component in order to mitigate those global challenges. It is one of the solution to meet the challenges. So this is what I Yes, wanted to share with you all. Thank you very much. obviously, sir. Thank you so much. The soil quality has direct implications on the quantity and the quality of the raw material yields, and it support the key functions that supply resources and commodities in the growing phase of the value chain. And fundamentally, soil underpins the value of the natural asset upon the business dependence. Actually, sir, this conference or this workshop is the main having the main aim of agripreneurship. Yeah. So I just want to ask one question on my own behalf, that what is the soil related challenges for the business? Yeah. Yeah. If I say that in our case, in the business, like we have in Nepal, we have digital soil map. In your country, you don't have, but that can be possible. But in some of the states, they are trying. Through that, we can see which nutrients are deficient in which region. Mhm. So in that case, the businessmen, they can think of those nutrients, and they can go for quality composting or for organic fertilizers, or maybe for that types of fertilizers which are very much crucial in that area. That type of they can establish those type of industries, agriculture, like depending on the soil types, soil properties, they can go with that type of business. So I just see that hardly around 20% of the total agricultural land is irrigated.
if I see the global scenario. So in that case, irrigation is one of the important factor. Until and unless we have good irrigation facilities, the nutrients cannot be used by the crop or by the plants until they have a good source of irrigation. Water if the soil do not have good moisture. So other business where what I wanted to say is about irrigations structures as well as other facilities for irrigation purpose, because this soil and water, these are very much interconnected, and these are some of the basic component for agriculture. So that has to be taken care of. Yeah. Yes, obviously, sir. So on the participants, do you have any question? Okay, let them ask, sir. Actually, the soil and the resource management is also one of the part of my interest. Yeah. So I just want to ask one more question, which related to the topic of this workshop. That what are the soil related opportunities for business or for Opportunities, the soil related. or for the entrepreneurship? Actually, the business word is not so good. Entrepreneurship is actually my word Yes, is. because like for the entrepreneurship, I just think I have few suggestions, because like organic fertilizer one, biofertilizer is another one. Biofertilizer, they can go for biofertilizer if they have. Another one is like green manuring, seed production for the green manures. These are some of the works they can carry on. Seed production part, they can take care of that. And biofertilizers, and even with the waste decomposer, these are very much popular even in India, waste decomposer and others. So these are the things, but it depends, upon the soil properties, as I said, because I cannot say everything about India, because everywhere your soil and our soil are very much similar. If we consider the northeastern part, and even with Yes. the southern east, I mean the northern part of India, there Yes. and Nepal is very much similar. But southern, you have even the coastal area, you have saline soil, so that can, I cannot say more about that. But in case of hilly areas and those northeastern part, you can think of those organic generally, because the because of the ecological environment, or because of those climates, we can think of organic production, because of the access to transportation is another factor there. So I think organic productions, organic products, that can be promoted in those areas. So I mostly focus here. We do focus on organic because we don't have a chemical fertilizer plant in Nepal. All the fertilizers we have to rely on other countries, India, Bangladesh, and other countries. We import from other countries. So we generally more focus on like organic farming, or like supplementing through nutrients through organic sources. So we go for decomposing or composting and biofertilizer productions. These are some of the things which we do, and also I do suggest in even in your country too. Yes, sir, definitely. Sir, one question is from our participant, Shrasti Raj Singh, that can you tell us which type of soil is good for which type of crops and which gives better productivity according to the climate, which best suits? Actually, I think the answer is too long, but if you can answer it briefly, Like sir. the generally, the soil, when we consider about the soil with good organic matter is the best. We consider it because soil health, one of the indicator of soil health is organic matter. So black soil with black definitely means is having good organic matter. So when if we consider about soil physical properties, then loamy soil is the best.
But when we consider about the pH, the neutral soil is the best. So if we mix up everything, then I just wanted to say that the soil with good organic matter, high organic matter content soil is the best. Whatever is the properties, other properties, because it retains more water, it has good porosity, it it has the more microbial community there, microorganisms and microbial population diversity is more. So where the microbial population and diversity is uh, high, in that case, the everything, the function of the soil goes very nicely. So the soil with good organic matter content is the best. Yeah. My answer is very short, but Yes, sir. Really, sir. So one more question is belongs to, I think, soil plant pathology, that what is the best fertilizer to use for the nematodes? nematodes, fertilizer for Yeah. the nematodes. Oh, this is quite. Nematodes is is path parasites. Pathogen. So how can I say that for generally here in our case we go for marigold plantations. Yeah. Marigold plantations, because of marigold, the nematode population it decreases. So the fertilizer, we don't recommend any fertilizer for those nematodes. Or Sir, I think, what is? yeah, I sorry. think I did not catch the question. Sir, one research has gone in our department here, that neem-based pesticides are also very much beneficial for against the nematodes, because of the soil fumigation, etc. Things are very much costly for the to control the nematode. So the soil-based biofertilizers can be helpful to check the nematode growth, I think, sir. Yeah. That is obviously is okay, but in our cases we don't have that much that type of biofertilizer. We simply have some of the nitrogen fixing and solubilizing bacteria. So Yes, that type of fertilizers in case of Nepal we don't have, but definitely that will help. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mm. Yeah. Thank you very much, sir, for the wonderful session and answering all the questions of our participants. Thank you so much. Uh, Really a wonderful session. And thank you very much for the opportunity. And this is one of the good opportunity for me to get exposed with around 207 participants today. Wow, it's a wonderful, participations. So it's a very excellent one. So thank you very much. If later on also I can answer some of the questions in chat. If let me check the Yeah, chat box, and I'll also answer sure, sir. those questions. And I would if you have if this society have some type of provisions to host workshops or seminars somewhere outside the country, one of the spots can be Nepal. So you can visit Pashupatinath, as well as you can host this. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Thank you so much. We will visit you soon. Thanks a lot. Uh, So now taking our program to the next segment. Our next guest is Dr. Manisha Sham. Let me introduce first them. Dr. Manisha Sham is scientist agronomy at AICRP on small millets, Regional Agriculture Research Station, Dindori Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Madhya Pradesh, India. Her field of specialization is weed science and intercropping system in various crops, especially millets and oilseeds crops. Ma'am has done BSc and MSc from Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur, and PhD from Rajmata Vijaya Raje Sindhia Krishi Vishwavidyalaya, Gwalior. Ma'am has 4 years of experience in teaching. Ma'am has guided 4 MSc students. Ma'am has published 18 research articles, 3 technical bulletins, and 6 book chapters. Dr. Sham has been awarded
as a best agronomist as well. On behalf of entire organizing team and audience, I welcome you, ma'am. We are eager to hear you. So the session is yours. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Good evening to all respected dignities, organizers, scientists, participants, and my dear farmers. Myself, Dr. Manisha Shyam, yes, as you know, scientist agronomy, working under Agrip on small village. Today I am presenting or discuss about very important crop about millets. And my presentation topic is present status, opportunities and challenges under millets cultivation. Sir, sir, some problem is created. Okay, no problem, ma'am. Then shall we Can you share share? your presentation? Yes, yes, sure, sir. Please, please Yes, share. please just, ma'am. Give me a few seconds just. Thank you. So please share in presentation mode. Sir, can you hear me, sir? Yeah, just a minute, ma'am. So here is your presentation, ma'am. Please carry on. Yes, yes. Thank you so much. So today's my topic is present status, opportunities and challenges under millets cultivation in India. Next slide, please. Here is your next slide, ma'am. No, sir, I can't visit this second slide. Yes, yes. Thank you. Thank you. So I'm delivering the firstly, what is millet? What is millet? So millets are when ancient fruit grain, first plant demonstrated from food, and this is very teeny, small seeded, which is uh, which is cultivated from annual grass, or this is cultivated in rainfed or sorry in temperate or tropical region in India. As you see the millet map in India, the different state cultivated different type of millets in different part of India. So in mostly in Madhya Pradesh, in my state, only kodo and little millet, which is a very popularly cultivated in state. Second slide, sir. ओके सो वी आर डिस्कस अबाउट मिलेट्स तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिलेट्स किन किन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं या क्लासिफाई किए गए हैं
Firstly, millets are divided by two major groups, which is first major group is bajra and sorry, excuse me, sir. Sir, I can't see. Yeah, just a minute, ma'am. Just a minute. Actually, there is some technical problem. I just resolve it within a few seconds. Just a minute. Okay. So can I try to share my screen from here? Is it okay, ma'am? Yes, thank you, sir. So we are discuss about millet classification. Millets are majorly classified in two groups. Firstly, is the major group that is divided by two crops: sorghum millets, that is popularly known as jowar, and second is a par millet that is called bajra. And second was is a minor group or minor millets group that is divided by eight crops, that is finger millet. Finger millet is also known as a ragi, madwa, mandia. And second one is a kodo, that is called also known as kodra, kodo. And the little millet, that is kutki, gundli, and swan also. Fourth one is a foxtail millet, that is also known as a kangni, kang, or kakum. And fifth one is a barnyard millet, also known as a jhangora and sawa. Then we come to next crop, next small millet crop, that is proso millet. Is also called chena or barri. In next crop is a brown top. This is also known as a basara, mandua, korale. And I want to share one another crop is a sikya millet. Sikya millets are majorly grown in African countries and also in India, in only Madhya Pradesh. We having only tribal peoples cultivated this sikya millet. It is a very small or teeny grain compared to another small millets. That is sikya millet, or also known as a crabgrass or sikya millet. Next slide, sir. Please, sir. Ma'am, next slide is shared actually. Sir, I can see, sir, in my screen, sir. Okay, so now we discuss in present status of millets area production and productivity. As you see, the African countries having almost more production, that is 423 lakh ton, with area 489 lakh hectare area. And second one is majorly growing Asia group, which is a production with 215 lakh ton with 162 lakh hectare area. And third one is majorly cultivated in India, which is a globally produced 173 lakh ton production with 80% of Asia and 20% global production. So next slide. So here we discuss next then to globally production, state-wise in India, millets production in India. So here you see the
sorghum, pearl millet, and finger millet, it's cultivated more area than small millet area, and these three crops are majorly more production than small millet. So here you see the Madhya Pradesh only 0.78 lakh hectare area with 0.69 lakh ton production. So next. So the majorly growing small millet area is Madhya Pradesh, and in India, as you see, the small millet area is only 3.93 lakh hectare with 3 lakh ton production. So we are struggling or expenses this small millet area to different state as well, Madhya Pradesh also. So next. So we are discussing importance of millet. Why we grow or why we cultivate two millets? Because of these area is very important for our farmer, for our environmental, or our new entrepreneur or startup entrepreneurship. So we discuss about in environmental point of view, agriculture point of view, nutrition point of view, sustainable development, and new opportunities for young entrepreneurs. So next. So we discuss about the environmental point of view, why we cultivate in mental point of view. So millets have evolved to survive extremely harsh conditions. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिलेट्स जो होती हैं वो हमें क्यों कल्टीवेट करने की जरूरत पड़ रही है, इस क्योंकि ये जो मिलेट्स होते हैं वो ऐसे कंडीशंस में भी उगाए जा सकते हैं जिन कंडीशंस में या जिन अनफर्टाइल सॉइल्स में दूसरे क्रॉप्स नहीं कल्टीवेट किए जा सकते. सो दीज क्रॉप्स cultivated in unfertile soil, very extreme temperature, slopey lands, and without need of human intervention. And second thing is it is millets having a rainfall very few like 500 to 700 millimeter annual rainfall is enough for millet cultivation. So next. So next slide. Yeah, ma'am, there is a next slide already on our screen. I think it is taking some time. Okay, sir. So second point is agriculture point of view. So these millets are cultivated for dual purpose, like grain and fodder purpose also. And this is a very economic, gives economic efficiency farming, not only farming to the farmers also. So second point is millets contribute to mitigate climate change because we know the wheat crop and the paddy crop is very majorly contributed to methane emission and temperature variation also. So we have the other option like millets to because these are the crops which is having atmospheric carbon pressure CO2, which is a very zero phase or 0% also. So these crops also growing in where these area and very efficiently by farmers and efficiently for farming also. Third point is a quantitative assessment or alternating monsoon cereal production in India, because the food security is very compulsory or very need this environmental resilience condition in India. So we have the option to cultivate this millets not only in India but in also other countries in world. So next slide.
So here we discuss in nutrition point of view. जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मिलेट्स क्रॉप्स होती हैं वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच होती हैं, और ये एज ए वीट और पैडी के कंपैरिजन में 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड कैल्शियम कंटेंट इनमें ज़्यादा होता है. सो दिस क्रॉप इज very very rich in protein and also rich in iron content also. So because of nutrition content ज्यादा होने के कारण ये छोटे बच्चों से लेकर, एक दूध पीते बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा फेमस है, और ये बहुत जल्दी डाइजेस्टेबल हो जाते हैं. सो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनमें ये मिलेट्स एक मेजर जो रोल है वो कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड सर. Next goal is a sustainable development and food goal. So millets are covering four almost goal, sustainable development goal. This is a zero hunger, good health and well-being. Third one is a sustainable production and consumption, and fourth one is a climate action. So we are already discussed in previously slide in 4 goals. Sir, next slide. So here is some POP or Unnat Krishi Karamala for small millets. As you see the rainfall requirement of different small millets, finger millet, kodo millet, and little millet. This is almost 500 to 750 or 700 millimeter in annual rainfall. These crop are majorly growing in very temperate or without rainfall in other part in different parts of India or other countries also. So these are the show these packaging practices because the millets having no there is no requirement of fertilizer or any pesticides or chemical. So the packaging practices are almost very low cost packaging practices, or these millets are no requirement of any chemical for cultivations. So next. So kindly share this next slide, please. Ma'am, slide already shared, ma'am. No, sir, I can't. Just a minute. That slide. Ma'am, is there? No, sir. Think some network problem. Now see that, ma'am. No, sir. And this one? Not now, sir.
Maybe it is quite possible that there might be some issue from your side on internet. Actually, the slides are already shared on our system. Okay. Sir, but here's the no network issues, sir. Can I share from here, sir? My side, sir? Ma'am, I think there might be an issue. So will you please share whatever you want to say actually, or if possible, then share on your side. Yes, ma'am, please. Okay. Firstly, you stop share from your side, sir, so I can. Yes, ma'am. I have stopped the sharing. Okay. Sir, I think there is an issue, sir. I am unable to share from my side, sir. Okay, ma'am, let me try once again. Ma'am, please stop your sharing and let me share Okay, first. sir. Can you find this? Not visible, sir. Ma'am, it is quite possible that you have getting some problem. Actually, we are sharing again and again, and everything is going right from our side. So, if possible, then will you please go to the conclusion that what actually you want to share with us and with our participants? Please, ma'am. Okay. So, मैम आप एक काम करें, आप उधर से बताते जाएं, आप नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते जाएं. एक्चुअली जो न्यू अपॉर्चुनिटीज वाली स्लाइड जो है वो ऑन गोइंग है. मैं इधर चेंज करता रहूंगा बिकॉज ऑफ स्लाइड्स विजिबल है. ओके, तो okay, आप okay, sir. Okay. हाँ, Okay, sir. तो यंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया वाली स्लाइड आपकी चल रही है. आप नेक्स्ट बोलेंगे देन आई विल चेंज. आप उधर से कंडक्ट करें मैम प्लीज. Okay, sir. Okay. So, here we discuss new opportunities with millet startup for young entrepreneurs in India. So our government of India is now we all knew the celebrating IOM, or that is International Year of Millets 2023. So we are जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इन 3 एरियाज में स्टार्टअप, इनोवेशंस और चैलेंजेस के अंडर बहुत सारे प्लान क्रिएट किए हैं और स्टार्टअप उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं. Firstly, we discuss about improvement of dehulling efficiency and separation. Second is the improvement of shelf life of millet-based product, and third one is a millet-based product innovative packaging. So all areas are very important in millet new startup or innovation.
because dehulling is a very critical process under millet processing. And second one is a very self life of millet product is another challenge. Third one is innovative packaging and another challenge under millet cultivation or millet startup. So these areas are openly with new startup for new entrepreneurs. The future scope under millets. So जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में आप लोग के साथ डिस्कस किया कि 3 जो हमारे एरियाज हैं जिसपे स्टार्टअप न्यू इनोवेशंस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, दीज आर दी फ्यूचर स्कोप इन इंडिया. सो फर्स्ट इज मिलेट प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है मिलेट्स के अंदर. फर्स्ट भी जो होता है, आप मिलेट प्रोसेसिंग की बात करते हैं, यदि हम 1 क्विंटल किसी भी मिलेट्स की प्रोसेसिंग करते हैं तो वी ओनली गेट 40 to 50 kg in rice grain. So this is the challenge in millet processing also. So यदि हम इस तरीके की मशीनें डेवलप करते हैं या प्रोसेसिंग जो मिल्स होते हैं उनको डेवलप करते हैं जिससे हमको एफिशिएंसी जो है 1 क्विंटल सीड से कम 70 to 80% राइस ग्रेन मिल सके. सेकेंड वन इज अ वैल्यू एडिशन. जो क्योंकि जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशंस होते हैं और जो इनमें क्योंकि ग्लूटेन कंटेंट नहीं होता है तो ये अनदर चैलेंज है हमारे मिलेट प्रोडक्ट बनाने के लिए. सो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हम इनसे बना सकते हैं, बट इनमें जो होता है वो जो आपका टेस्ट है वो नहीं होता, तो ये अनदर चैलेंज है फॉर वैल्यू एडिशन. एंड थर्ड वन इज रेसिपी डेवलपमेंट. तो रेसिपी डेवलपमेंट के लिए का भी यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है और ये फ्यूचर्स जो होगा इसका मिलेट का कि रेसिपी में इस तरीके से क्या ऐड किए जाएं जिससे इनका जो मार्केट है या जो आगे फ्यूचर है वो ज्यादा अच्छा हो सके. So challenges, what is the challenge under millet industry? So these 4 challenges under millet industries are very difficult and they're challenging to millet industries. First is a processing efficiency. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 क्विंटल के बाद में हमको सिर्फ 40 to 50 kg मिलता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे मिलेट इंडस्ट्री के लिए कि किस तरीके से हम इफिशिएंटली इस प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को बढ़ाएं. और इसमें जो फर्स्ट और सेकेंडरी प्रोसेसिंग होती है उसको किस तरीके से हम मार्केट में लिंकेज कर सकें. सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेसिंग. जैसे कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे ये कल्टीवेशन होता है मिलेट्स, वहाँ पे आसपास क्योंकि प्रोसेसिंग सेंटर्स नहीं होने के कारण और मार्केट नहीं होने के कारण ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि इनकी कीपिंग क्वालिटी जो है एज ए सीड वो बहुत ज्यादा है. आप यदि 50 ईयर्स तक भी इसको सेव करते हैं या रखते हैं तो ये रहेंगे, बट जैसे ये डीहल होता है या प्रोसेस होता है इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो मिनिमम 15 to 30 डेज ही रह जाती है. तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है. थर्ड वन इज सेल्फ लाइफ ऑगमेंटेशन. सेल्फ लाइफ दैट इज firstly we discussed this centralized processing because the self life of all product is very thick. Fourth is marketing and market linkage. So marketing market linkage में ये चीज होती है कि जो हमारे मिलेट्स होते हैं सभी अवेयर हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये न्यूट्रिशन से भरे होते हैं, बट कोई भी इन्हें कल्टीवेट करने के लिए बाकी प्लांट्स नहीं कर रहे हैं. और जैसे कोई कल्टीवेट भी करता है तो इसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है. मार्केट अवेलेबल भी है तो सारे लोग अवेयर नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट हैं या इनसे बने प्रोडक्ट हैं, ग्रेन्स हैं, वो कहाँ पे मिल जाएंगे. जैसे कि यदि किसी आम लोगों को यदि भूख लगती है तो यदि एक छोटे तबके से लोग जो बड़े लोग हैं, रिच पीपल हैं, उनको यदि भूख लगती है तो वो चाहेंगे कि हम बिस्किट फॉर्म में या कुकीज फॉर्म में मार्केट से जाके ले सकते हैं. बट इस तरीके से यदि हम मार्केट लिंकेज को टाइप करते हैं मार्केट से या जितने छोटे वेंडर्स होते हैं या छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं उनसे, तो ये जो प्रोडक्ट है वो सभी लोगों के पास में उपलब्ध हो सकेगा.
Next slide. So here we suggestion to enhancement of production and productivity under millet intensification. So here's my view. First is a strengthening quality and seed chain by fully support to breeder seed procurement. Second one is a support foundation and certified seed. Third is a public-private partnership board seed hubs. So second opinion is a frontline technology demonstration or cluster demonstration in various tribal or farmers area, and demand creation through awareness and increase in consumption. And third one, very important, to crop diversification, focus in favor of millet, and states to take step for procurement. That is all my side, sir. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for your good Sorry session. for And yeah, sorry, sir. sorry from our side also, because of there are some, we can't do anything with the technical errors. Okay, so no problem at all. Ma'am, there is a question from Dr. Arvind Pal Singh that millets are difficult to swallow as are very dry and rough, and they think that it takes longer time to digest. So is there any variety or any solution for this? No, sir. This is no. Actually, जो आप क्या मैं जान सकती हूँ किन मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किस मिलेट का वैरायटी जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर अरविंदर पाल सिंह। जैसे कि मैं जानती हूँ सर कि सभी जितने भी मिलेट्स होते हैं, स्पेशली स्मॉल मिलेट्स, वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, बट उनकी एक क्वांटिटी होती है कि आपको उस क्वांटिटी को मेंटेन करना है, मतलब आपको ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि ये जो कम क्वांटिटी है उसी में आपका जो टग है वो जल्दी से भर जाएगा, और आपको दिन भर के लिए ये, क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी न्यूट्रिशन होते हैं, उसकी वजह से आपको एनर्जी दिन भर रहेगी। तो इसकी क्वांटिटी ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि यदि आप पहली बार, क्योंकि आपका जो स्टमक है या आपका लीवर है वो मिलेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए अभी नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का ऐसा है कि हम राइस और जो व्हीट है उससे बने प्रोडक्ट खाते हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ों को लेने के लिए थोड़ा जो होता है समय, वो आपका लीवर तो टाइम टेक तो करेगा। और यदि उनको किसी मिलेट्स से रिलेटेड पूछना है, मतलब स्पेशली किसी मिलेट से, तो प्लीज वो पूछ सकते हैं मुझसे। Yes, ma'am, there is a question related to millet actually, that how many total number of varieties of millets are cultivated in India? Mr. Jatin Kumar is asking this question. सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिलेट्स जो है हमारे जो क्लासिफाई हुए हैं वो 2 मेजर ग्रुप्स में है। पहला मेजर ग्रुप है, उसमें सॉर्गम और पार मिलेट है। तो देयर इज मैनी वेराइटीज विच इज रिलीज्ड अंडर पार मिलेट और सॉर्गम। एंड सेकेंड जो ग्रुप है वो मैंने आपको बताया माइनर मिलेट्स और स्मॉल मिलेट्स जिसे कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 जो मिलेट्स हैं मेजरली, और 7 मिलेट्स, सॉरी, सिकिया मिलेट्स इज अ डिफरेंट मिलेट्स। सो 7 मिलेट्स वी आर कल्टिवेटेड इन इंडिया मेजरली। और इसमें जो है कोदो मिलेट मेजरली वी आर ग्रोइंग इन मध्य प्रदेश स्टेट। So we having 19 varieties right now. We having 19 varieties in kodo millet, and in other millet we having little millet. So in our state we having approximately 10 varieties in little millet. In different state having different number of varieties. So yes, ma'am. Okay. Mr. Kaluram Bhami is asking that any scheme related to the millet development? Yes, sir. उनको किस बारे में जाना? For cultivation, for procurement, or for
Mr. Kaluram, will you please ask your question in detail and drop in chat box? Then we will ask it later. And another question from Anand is that what are the previous techniques of the store of the millets except minor from the pest infestation? Because there isn't any pesticides registered as label came. जैसे कि जितने भी मिलेट्स होते हैं स्पेशली माइनर मिलेट्स को छोड़ के दे हैव वेरी गुड कीपिंग क्वालिटी like 15 to 20 years, or in case of minor millets they having 50 years approx or above year for keeping quality. So that is a no pesticides for small millets, or for keeping for storage or keeping because they have no required to any chemical or any pesticide. That is why we have another option as a millet to grow in India or another parts of countries also. Okay, ma'am. One question is related to the entrepreneurship, that how to start the millets business. Like Dalia, one of our participant, Ujjwal Chauhan, want to ask this question. Okay, so sir, in our university, one is a food technology department there, which is providing many training about this entrepreneurs. In startup to in their new business in for millets or another small millets also. So they contact in our institute or IMR, so they get technology to how to prepare dalia or another product which is made by millets or small millets. Is there any government subsidies are provided on the millets cultivation or processing, etc.? Sir, in our state and in other state also, we have millet mission, this type of plants. So government funded many of plants or subsidy to farmers to create one farmer producer company. So they get very good advantage to create this farmers producer company, and they all know the how to make the different processing, or after secondary processing they also make good amount of money or product, or selling the that product to another countries also. Are you satisfied with my answer, or if any participant has any question, then he or she can drop its query in the chat box. Sir, please share my Okay, no email problem. address with Thank you so much, another ma'am, participant, for so the they wonderful can session share. and answering all the questions of our participants. And again, I am very much sorry to you and all the participants for the technical problem which we have faced during the session. Sir, one request is from my side, sir. Sir, please share my email address to another participant, to they can share their queries. इधर आकर के इसको कैसे बोलूं? Our next guest speaker is Dr. R.P. Divakar sir. Sir is presently working as scientist at Acharya Narendra Deva University of Agriculture Technology, Umarganj, Ayodhya, UP. Dr. Divakar
Dr. Dr. R.P. Divakar, born in Kanpur born district in of Uttar Kanpur Pradesh, district of Uttar Pradesh, and and graduate from the graduate from the N.T. GBUA and Pantnagar, T UK, Pantnagar, UK, Uttarakhand, in the Uttarakhand, year in the year 2004, 2004, and and qualified his qualified master his degree master in degree veterinary in veterinary microbiology microbiology from the College from of the College Veterinary of Veterinary Science and Animal Science and Husbandry, Animal Husbandry, NDUA, NT NDUA, NT Kumarganj, Kumarganj, Faizabad. In the Faizabad. year In the year 2006, Dr. 2006, Divakar Dr. was Divakar joined was as joined SRF as in Research SRF in Unit, Research Institute Unit, of Institute of Biotechnology, Biotechnology, Patwa, Patwa, Patwadgar District, Patwadgar Nainital, district, Uttarakhand in Nainital, year Uttarakhand in year 2006, and 2006, year and 2007 year joined in 2007 teaching joined as in a teaching teaching as a associate in teaching Department of associate in Veterinary Department of Microbiology Veterinary in Microbiology in ANDUA ANDUA NT Kumarganj. NT Kumarganj. And in October And in 2007, October joined the 2007, state joined government the job, state government veterinary job, officer, veterinary and in year officer, and in 2012, year 2012, joined as assistant joined as professor in assistant Department of professor in Veterinary Department Microbiology, of Veterinary Microbiology, College of Veterinary College Science of and Animal Veterinary Science and Husbandry, Animal Husbandry, ANDUA NT ANDUA Kumarganj, and T Ayodhya. Kumarganj, He Ayodhya. was He was cleared cleared ICAR, ICAR, ASRB net, and ASRB net, published and more than published more than 156 research 156 articles, review articles, short research articles, review popular articles, articles, short 8 communications, veterinary popular articles, textbooks, 8 pamphlets veterinary in different textbooks, national and international pamphlets journals in of different national and repute. international journals Sir, of we are eager repute. to hear you. Sir, we are Kindly eager to hear enlighten you. us. Kindly Now the enlighten session is us. yours. Now the So the session is over to yours. you, sir. So the over to you, sir, please. Divakar, sir. Divakar, sir, can you hear me? करो ना, अनम्यूट करो इधर से, अनम्यूट करो तभी तो आवाज आएगी आपकी. Divakar sir, are you there? Kindly unmute yourself. Okay, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Please, please, sir. There is a technical problem, that's why I am unable to join in the desktop, and I am pursuing this topic in my my cell phone. It's a great honor to me that the organizing committee give me the opportunity to say and share our experience in 3 days international training come workshop, that is the agripreneurship opportunities and current challenges. Myself, Dr. R.P. Divakar, Assistant Professor, Department of Veterinary Microbiology, Kumarganj, Ayodhya. As the opportunities, everyone want to got a good opportunity to do something special, but not all got the opportunity. Why we are waiting? And and you start work with you, which you plan in your mind. Everyone wants to become a rich person, and it is possible when you work hard in your profession, honesty, good management, and marketing. Your goal is clear. In coming days, the agriculture and allied sciences, in agriculture and allied sciences, especially animal sector, play a key role in providing better opportunity to others and help in increasing the Indian GDP. The, today's farmers think in multidirectional, like
dairy farming, poultry farming, and milk byproduct selling. Here I prepared many slides for our dear participants, but this time my colleagues, Dr. Naveen Kumar is arranging. That's why I am started. The animal sector is the backbone of the Indian farmers. As my topic of the today's discussion, dairy farming and their challenges. So, first of all, how to start a dairy farming? Before starting your business, it is must to survey in the area where you start your business. So it is the important that you can prepare by the survey, and you got some raw material data that what the people demand, and you know that the more than the 70% population belonging to the rural area, and every day everyone life want to the animal protein, either in the form of cheese, butter, milk, or the egg, which is consumed by every person, which are vegetarian or the non-vegetarian. In agriculture, farmers rear the animals like the cattle and buffalo for dairy use of the milk and extra milk sell out. But if you start a dairy scientifically, then you got benefited, and always start this business in a small scale, like 50 to 20 animals, not started your business in large animal population, because in small scale population, if any problem is there, just like a disease outbreak or any other things, then you can cope up. Otherwise, there is huge losses, because in the veterinary sectors, animal life as the human life, there is no, you can say that there is no guarantee of the lifespan. That's why you start in the small scale population. Then, as our unemployed persons always think that what I do, then it is very difficult which business you start. But as I am expert of the veterinarian in the veterinary sector, we said to the pupil that you start the dairy. If anybody can think that what I am do in the animal sector, first your mind is click that the dairy is the best business. Then most of the dairy farmers got not as benefited as he think, because dairy is a profitable when which you are going it in a scientific manner. Otherwise, you got huge losses. So my first slide, that which are not visible to you, but I am telling you, I'm telling you that is the what is the dairy. The dairy is a building or the room for processing, storage, and distribution of the milk and milk byproduct. Not only that, you collect the milk and sell the milk. Always dairy is working in two directional method. In two directional method, one is the milk and other half is the byproduct. The first
when you start the dairy, then you think that the selection of the breed, otherwise you got the loss. The selection of the breed, the selection, you can, there are a lot of the animals breed, cattle, buffalo, sheep, goat. In the cattle there are different breeds area wise, and in buffaloes you can see the different buffalo. As you know, there are Nagpuri buffalo, Muzaffarabadi, Mehsana, Murra. There are different breeds. So first of all, you select the breed, which breed is suitable for your business according to environmental condition in that area where you start your business. Not only select those breed which are high yielding, but select those animals which are disease resistant and suitable to adverse condition. So you can go for that, which breed is survive in your area, because as you know that the environmental ecological system is changing day by day, and in such situation the disease resistance breed is important for your dairy purpose. And second, the most important, that is the starting the dairy, you can plan which type of the housing you make. As you saw in the rural area that the farmers are kept 3-4 cows or the buffalo, and 3-4 cows and the buffalo, then their work look like a backyard poultry farming, but the such condition is not beneficial for the animal health as well as the farmers welfare. So you can go for the housing there. In the dairy sector there are two types of the housing system: head and head system and tail to tail system. Head system is required less labor, but there is the chances are there the respiratory disease and the other disease which can spread through the airs can spread one to the second. But in this system less labor is required, and in tail to tail system more labor is required, and there is the chances that the disease outbreak is less. In the tail system you can decide head and head system for the benefit of the dairy farming. In the tail and tail system is also beneficial, but require more labor. And then go for the insurance, animal health insurance, because as you know, every year there are disease outbreak is occur. Then in such situation it is essential that your animals is properly insured in such if any outbreak is there, that you can not get the more losses. Then you go for the feed and fodder management, as you saw in the slide, or the nutrition. There are 4 types of the nutrition is available in your dairy farming: the green fodder, dry fodder, concentration, silage, and the mineral supplements. In green fodder, the fresh forage crop like the maize is available in your area. In the dry fodder, the hay or the extra, which is required for the roughage to supply to support the digestion. In the roughage, you have the fibers which help in the digestion, and the concentration
in concentration the grains, oil seeds, and the protein. As you see in the silage, there are silage is the fermented forage storage in the airtight condition, and the silage is made in those situations where feed and fodder is not available whole year. That's why you go for the hand silage making, which is essential for the animal health and wealth. And the mineral supplements, in the mineral supplement, the calcium and the phosphorus is essential for the bone development and other disease control. These are the important for the animal health to increase the immune system. Then most important, that is the disease. Next slides, that is the disease, in which as you know that in dairy sector there are three most important diseases, that is the FMD, foot and mouth disease, black quarter, and mastitis. Mastitis is got in high yielding animals, and in high yielding animals, if milking is not properly done, or in not done by uh, as you know, if you told that the scientific manner, that is the full hand milking, then the high yielding animals go for the mastitis. In such situation, such type of the animals are suffering, and your dairy sector is good for the loss. In FMD, foot and mouth disease, in FMD, FMD is spread by the picorna virus. In every year, if you see in the dairy farming that the FMD is the most dangerous, economic losses is there, and this is because of the not properly hygiene condition is maintained. That's why the FMD is spread. In FMD is also spread because of some floor is there is two types of floor, kacha and pakka floor. If in the dairy farm, if you start the dairy, the half of the floor is pakka and half of the kacha floor, then your animal which are kept in your dairy, they are not suffering from the FMD. And if FMD is outbreak in your dairy, then there are huge losses. So there, the government provide the vaccination program before the rainy season. All the animals are vaccinated with the FMD vaccine. And the mastitis, as already discussed, that the mastitis is occurring most of the animals which are high yielding. And there is a most important thing is that the milking, either by the, if number of the animals is more, then go for the machine milking. But the machine milking, there are some disadvantages. And in mastitis, at the time of the milking, you can properly clean your hand. Thorough milking, full hand milking is there, and after milking you can take some antiseptic solution which on the teeth, which can block the orifices in the teeth, so that the bacteria or the other infectious agent cannot enter inside the body, and there is a less chances that the mastitis is there. And next, which is the important disease, that is the black quarter, which occur in the
calf, in younger calf, mostly in the cattle. This is the disease. These three diseases are mostly found in the dairy sector, and the black quarter is the disease which can very dangerous because of the toxins are produced inside the muscles, and if animal is not treated in the timely and properly, and regular monitoring is not done, then animal health is grave, and go for the move towards unproduction, and ultimately death is there. Then some of the people thinks that what are the equipment required in the dairy. As you uh, see in the rural area that there is no equipment is necessary, but when you go for the business purpose or the dairy sector, there are some challenges is there, and to avoid these challenges you have some equipment from starting from the dairy, that is the machine milking, cooling system, feeder and grooming equipments. As already I have discussed the machine milking and the cooling system. The machine milking, either are the full hand milking or the machine milking, but the machine milking, there is a, if you use the machine for the milking, then there is the chances that your animal who is the life is 15 to 20 years, they are unproductive before the 15 years because of elongation of the teeth, and when the teeth is elongated, there is the production is decreases down, and the other infectious agent enter inside the teeth and causes the different type of the diseases. And the cooling system is the play the vital role for maintaining the quality and the freshness of the milk, and these system ensure that the milk is rapidly chilled and stored for optimum temperature to minimize the bacterial growth and preserve its nutrition value. And this is done for the businesses when the milk production is much more. And the feeders in your dairy, there is the one feeding plant is there, so that you can give the feed and fodder to whole year to their respective cattle and buffalo. And grooming equipments provide the, as a animal become comfort zone, then they give their optimum production. There are some equipments like a comb, saddle, carry comb. They are the some equipments which brushes. They are the equipments which can grooming over the body. Then some of the parasites which are removed out, and they because of external parasite irritating the animals, and after irritation the animal production is decreases down. That's why it is necessary that 2 or 3 days the grooming is required every animals for their got the maximum production. What are the workers and their position? As today's there is all the system is work, all the system, there is a very less people is required in big dairy farm. Most of the machinery is working, but if some of the skilled person is there, some of the milk recorder, some of the a man is required to watch the animals, what is their activity, what is their uh, any other things, which are minimum 3 to 4 persons are required, which can properly visit visit, visit your animals whole day. Any activity is there, unnatural activity is there, they can notice
one position is for the veterinary officer is there, or you can contact the veterinary officer to visit your the dairy farm regularly in 1 month or the 15 days, so that deworming, they can prescribe the deworming on any other things, vaccination or any other things. If he saw, then there your dairy is good in benefited. The quality control, there is a one small laboratory which is required. If you go for the byproduct, then the control of the milk is quality control of the milk. What is the quality control? There are some equipments is required, such as the fat, such as some parameters like the fat content, bacterial count, somatic cell count are essential before the marketing. And such type of the same things are required in the byproduct. You check the product, then go for the packaging, because you cannot take the milk as such in the market. You can package the milk in properly labeled, in a tag, properly tag, name your dairy sector, what is the composition of the milk, what is the fat percentage is there, same required in the byproduct. Then go for the marketing. Otherwise, during the transportation, there is the chances that the anybody, if there is make the adulteration, then your name and the fame is goes down, and your dairy is not believe, people will not believe your dairy sector, and there is huge losses, because, and I am told already that the honesty, hard working, and marketing, these make your dairy success. In the marketing, before the marketing, you start the milk. Before go for the marketing, you have used the different social medias advertising your the product, your milk in a different areas, uh, to show, and packaging involvement. These are the some area which can you can use. And same work on the byproduct, because today's social media play important role to the advertisement. And uh, you have go for the food food security, take the permission for the food security, then after, then go for the marketing. And the benefits of the dairy farming, there are which we are talking about the benefits, the consistency source of the high quality dairy products, and the create the job for the economical development. At the dairy, if you open the business, you can provide the job to the others. That's why I told you earlier that the in the veterinary field, or the veterinarians or the animal sector play an important role in the coming days in the Indian GDP, to increase the Indian GDP and the food security and the nutrition. As dairy farming contributes to food security by ensuring a consistent supply of the nutrition dairy product, by meeting the nutritional needs of the growing population. Dairy farming help combat malnutrition and support the overall health and well-being. So these are the some slides by which you can start the dairy in a scientific way, scientific manner. Then if you started in this way, you got the opportunity, and your dairy is benefited. Otherwise, if you are not enlist these things, then dairy dairy sector, that most of the dairy sector are go for negative, or the you can not got the benefit as they thinks.
So these are the some points which are share you. There are one video which I am unable to show, but in the dairy sector, here one things is that the calf set is required, and second is the uh, disease area. Disease area means that is the segregate the animal which are suffering from the disease, separate those animals from the healthy one, so that the if disease outbreak is there, the healthy one is separated in one sided and the disease animal are separated in the other side, and properly treatment care, and your worker are go regularly in dairy and see all the animals, their activity. That's why uh, if properly vigilance is there, otherwise dairy sector is go for the losses. If these points you kept in mind, then definitely your dairy is working, and as I told you that the 50% is the milk and the 50% byproduct sell in the market. As the milk prices, if you can calculate in a raw way that the 50 rupees per liter, and if you sell the paneer, or then the paneer rate is just double. In such a condition, uh, you can sell the byproduct, then your dairy is got benefited. Thank you. Okay. Thank you, sir. Any question? Thank you very much, sir. Although we missed the slides of your presentation, your lecture was really very helpful in the field of entrepreneurship. Hope all the participants have benefited. Perhaps everyone become aware of the importance of the dairy industry during the COVID. Really, your lecture was important on the behalf of entrepreneurship and the business purpose. If any participant has any question, then he or she can drop in the chat box. Actually, some technical problem in my desktop. That's why I am prepare one video of the dairy as in our university dairy. There are head-to-head system is there, and that is the instructional livestock farm, which is Hmm. taught by the undergraduate students. For the head and head system and tail system, both are available. And what is the difference the student learn here? uh, if you start the business, the honesty, hard working, good management, and marketing, these are the four pillar which provide the business success. And your goal is very clear. There is no shortcut to earn the money in less period of time. You can work hard in your profession, then you definitely you got your goal and achieve something which you want. Yes, sir, definitely. Sir, I just want to ask a question from my side that Yes. how can we minimize the investment in the dairy business? If we are going to initiate a business, then how can I minimize or how can we minimize the investment? As I told you that the if you start in your mind that the I am starting the dairy farming, then you go for the small scale. First of all, go for the small scale. This is the learning phase. Either you can visit to other dairy, that is okay, but if you start own dairy, then you first of all you start in small scale. Otherwise as I told you that if you take a large number of animal population in your dairy, and if any disease is there, then
this is the livestock. There is no insurance of the life. If some of the diseases which are spread by the air, which can spread so fast, some of the genetic diseases is there. In such situation, if your number of the animals is less, you can care properly, handle it. If any animals are diseased, then you can easily separate out from other animals. And if unfortunately there in it happen any tragedies, then losses is very less, because in first time uh, there are a number of the cases I heard, and I got that the people started a big dairy, but after 2 or 3 years they close the dairy farming. And when talk to him, they told that the I got the huge losses. And in Indian situation, we are thinking that the my name and fame is joined with the profession. And I am suggest everyone that the either any things, if you started in the small scale, you can properly care for it, and you can easily manage it, and everything is handable. Otherwise there is a chances that the easily you can got the feed and fodder for the 10 to 12 animals. The pasture land is there nowadays. Government plan that the as you saw that the in the village, that the pasture land is the less. In the coming days is day by day is and population is increasing and the pasture land is decreasing. And now the government and the local area pradhan or the local government want that the all the animals are bind in one area and go for the pasture. Because nobody has want to find or kept the animals where he live, because everyone want to the milk and the other material, either milk byproduct, but they cannot kept the animal. So in such a situation, uh, in the modern situation, this time there are many businessmen who have no animals but start the dairy farming without animal, but they can collect the milk and cooling, packaging and distribute them. And there is a big name is there. I cannot take here name anyone, but today's is many cities you can see the there is many dairies are started, but you when you go for the where is your animal, there is no animal. They collect the milk, supply and packaging, supply and distribute. Just a full time job is there. And but they are not a good habit. You can kept the minimum one animal you kept, then um, as our tradition, or I can say that there there is the tradition that the animals are kept everyone, so that we can affection that that things. Yes, sir. And another question is from Dr. Gyan Prakash, that how will agripreneurs tackle livestock disease problem to secure startups? As I told that the if you started the dairy farming, dairy business, then first of all uh, you select the breed, then go for the insurance purpose, insurance your breed. And the dairy farming, there are two type of the insurance: animal insurance and dairy insurance.
And the selection of the breed is the much more important, because when you start the dairy, you can show that the who breed give the highest milk yielding, but not go for the highest milk yielding, also go for the disease resistance animal, because high yielding animals are so sophisticated that cannot survive in Indian condition in different area to area. That the hilly, if you can brought the animals from the hilly region and kept in the plain, then you can saw that the production and their physical uh, structure is also changes. That's why you can select those breed which can survive in your area, and same time you can select those animals which are disease resistant. There are some diseases which are not got in the some animals. You can do it. And when your dairy is started, then you can go for the artificial insemination. Then in the coming generation, or increase the milk yield. First of all, you can select that animal which are less, which have less you can I think production is important, but the disease resistance is also important. Yes, sir. Yeah. Okay, sir. So thank you very much, sir, for your amazing and knowledgeable lecture for the participants and all of us. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Your video will be shared to the participants in the group, so they can be benefited from it. Definitely. Thank you, sir. Yeah. Our next, yeah, thank you, sir. Our next guest speaker is Praval Pratap Singh Verma, sir. Dr. Verma, Senior Technical Officer at CSIR Central Institute of Medicinal and Aromatic Plant Research Center, Urura, Bageshwar, Uttarakhand, has made significant contributions to the field of agriculture technology, particularly focusing on the medicinal and aromatic plants in the high altitude region of the Western Himalayan region of Uttarakhand. Holding a BSc in Agriculture from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra in 2010 and an MSc in Horticulture from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, a central university in Lucknow in 2012. Furthering his academic pursuits, Dr. Verma has recently completed research work on a PhD in horticulture from Integral University, Lucknow. In addition, he successfully qualified the National Eligibility Test in 2016 in vegetable science conducted by ASRB ICAR New Delhi. Throughout his educational journey, Dr. Verma consistently demonstrated a commitment to the excellence, which has undoubtedly contributed to his success in the field of agriculture research. During his tenure of service, he has undertaken various research endeavors encompassing the standardization of the nursery technique of pyrethrum, mint, geranium, stevia, and lemon balm, etc. He has also part of the team that exhibit superior survival performance and adaptations qualities in stevia chirata. This is an important discovery to expand chirata cultivation in India. Additionally, he played a pivotal role in determining the optimal media combination for the cultivation of cutting of the oregano and majorana. He has successfully standardized intercropping techniques for basil for the lower altitude region of Uttarakhand. Further, he has identified suitable cultivars and nutrients doses of mentha, basil, oregano, and pyrethrum in the lower and the mid hills of Uttarakhand. Dr. Verma also, along with other team members, has developed a rainy season production technology RSPT for rosemary and mother plant saving technology for oregano for the mid hills of Uttarakhand. In the domain of post harvest practices, he has devised protocols to enhance the quality and storage life of dry herbs.
The fruits of his research are evident in his extensive publications, which include 35 research papers, 5 review papers, and 8 book chapters in renowned national and international journals and books. Additionally, he has published more than 100 articles in both Hindi and English in popular agricultural magazines and newspapers. Dr. Verma has also edited 2 books and prepared 3 training manuals for program conducted by CSIR CIMAP. Active participation characterizes Dr. Verma's engagement with the scientific community and the public. He has practiced in the organizing committee in seminar conferences and numerous Kisan Melas, agricultural exhibitions, showcasing his finding and expertise. He gave 6 oral presentations in national and international seminars and 15 lectures in training programs and workshops, further disseminating knowledge to diverse audiences. Recognizing his excellence, Dr. Verma has been honored with 4 awards, including 1 Best Poster Presentation Award, 1 Young Researcher Award, and 2 Young Scientist Award at different national and international conferences. Dr. Verma continues to disseminate MAPES, technologies through seminars. share करूं फिर मैं screen. Just a minute, sir. An agriculture gathering in his current role, and it continues to function as a key team member, overseeing a wide range of the activities. There is a very long list of Dr. Verma, so I just want to invite Dr. Verma to present his lecture. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. I am audible, sir. Am Yes, I sir. audible, sir? Yes, sir. Perfectly, perfectly. Good evening, sir. Good evening to all organizing committee members and all participants. Myself, Praval P.S. Verma. I am working in CSIR CMAP Research Center, Purara, Bageshwar, Uttarakhand. First of all, I am thankful to Dr. Jiten Mehta, sir, Director, Vital Biotech Publishing House, and President of AFTEB Society, to giving me the opportunity to deliver the lecture international training workshop on agripreneurship opportunity and current challenges. Now, I'm giving my presentation on advanced agrotechnology practices and post-harvest management of culinary herbs. In last 2 days, 2 experts from CMAP, CSIR CMAP, given the lecture on maps. I think participants have sufficient information on medicinal and aromatic plant. And today, my presentation is on culinary herbs. Before starting my presentation on culinary herbs, advanced agrotechnology, and post-harvest management, I am talking about what is herb. Herb can be defined as they have less woody part and soft stem and lots of water content. And these herbs may be in annual nature and in maybe perennial nature and maybe biennial in nature. And these are the type of herbs. Herbs can be defined in culinary herbs, medicinal herbs, aromatic herbs, ornamental herbs, and nutritional herbs. If we talk about culinary herbs, basil, thyme, oregano, rosemary, mint, lemongrass, celery, chives, and parsley. These are the herbs are come under culinary herbs. And if we talk about medicinal herbs, chamomile, ashwagandha, artemisia, sarpagandha, aloe vera, safed musli, satavar, Indian tulsi, these are the herbs are under come in medicinal herbs. If we talk about aromatic herbs, these are the herbs are come under aromatic herbs like lavender, rose, jasmine, lemongrass, palmarosa, citronella, geranium, and so on. Now I'm talking about ornamental herbs. ऑर्नामेंटल हर्ब्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हर्ब्स हैं इन्हें हम अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं और अपने किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं. तो ये जो हर्ब्स होती हैं, ये जैसे लेवेंडर, रोजमेरी, ऑरिगेनो और जो थाइम है, ये जो हर्ब होती हैं एक
जैसे लेवेंडर की बात करें तो ब्लू कलर की फ्लावरिंग होती है, जैसे थाइम की बात करें तो ये इसे जमीन में लगाया जाता है और ये जमीन में एक कवर की तरह काम करती है। ऑरिगेनो में व्हाइट कलर की फ्लावरिंग होती है और रोजमेरी में ब्लू और व्हाइट कलर की फ्लावरिंग होती है। तो ये जो जितनी भी ये हर्ब्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं इस स्लाइड में, तो ये सारी की सारी हर्ब्स दिखाई जो दे रही हैं आपको, ये सारी हर्ब्स के अंदर एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। और इन मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज इन हर्ब्स में पाई जाती है, इसमें एक इसेंशियल ऑयल पाया जाता है वॉलेटाइल नेचर का, जिसकी वजह से इसकी एक गुणवत्ता जो होती है इसकी इसेंशियल ऑयल की वजह से होती है। और उस इसेंशियल ऑयल में केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट इनसे बनाए जाते हैं इन हर्ब से, वो पर्टिकुलर जिस भी इंडस्ट्री में जिस डिमांड रहती है वो उसकी केमिकल कंपाउंड की वजह से ही होती है। एक लास्ट कैटेगरी जो है वो है न्यूट्रिशनल हर्ब। न्यूट्रिशनल हर्ब में सैलरी, चाइव और डिल आता है। तो ये जितने भी आपको ये कैटेगरी दिखाई दे रही हैं, मोस्टली मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के अंडर में ही आते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ कलिनरी हर्ब्स की, मेरा जो फोकस है आज कलिनरी हर्ब्स पे है। कलिनरी हर्ब्स हम डिफाइन अगर हम करें, कलिनरी हर्ब्स हम उसे कहते हैं जो किचन में डिश जो बनती है हमारे घरों में, उसमें एक अच्छा फ्लेवर और एक अच्छा एरोमा देने के लिए इन हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इसके अलावा जो 4 कैटेगरी आपको दिखाई दे रही हैं, इसकी बातें ना करके केवल कलिनरी हर्ब्स पे हमें फोकस करना है। ये जितनी भी हर्ब आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे बेसिल, थाइम, ऑरिगेनो, रोजमेरी, मिंट, लेमन ग्रास, सेलरी, चाइव्स एंड पार्सले, ये इंडिया में अभी यहाँ पर इसका कंजप्शन किया जा रहा है। पर अभी बहुत ज्यादा इंडिया में इसका कल्टीवेशन, जैसे थाइम, रोजमेरी, सैलरी, चाइव्स और पार्सले, इनका कल्टीवेशन इतना ज्यादा नहीं है। तो अभी इंडिया में कंजप्शन जो भी हो रहा है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके इंडिया में यहाँ पे लाई जा रही है, और इसका प्रोसेसिंग करके, इसका वैल्यू ऐड करके इसे यहाँ पे जितने भी आप शॉपिंग मॉल देखेंगे वहां पे आजकल ये culinary हर्ब्स अवेलेबल होती हैं। तो अभी जैसे फर्स्ट आपको इमेज दिखाई दे रही है, रोजमेरी की इमेज है। ये जो प्लांट है ये पेरेनियल नेचर का प्लांट होता है। हिली एरियाज में, टेम्परेट रीजन में इसे ग्रो किया जा रहा है। अपने इंडिया में इसकी कल्टीवेशन सीमैप, इसकी खेती पिछले कई सालों से किसानों से हिली एरिया में करा रहा है। और ये एक बार सेम फील्ड में लगाने के बाद 10 से 12 साल सेम प्लांट से ये हार्वेस्ट लगातार देता रहता है। लेमन ग्रास का कल्टीवेशन भी सीमैप पूरे इंडिया में मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में भारत में आसानी से इसकी खेती कराई जा रही है, और किसान इसकी खेती से बहुत ज्यादा पैदावार इसकी खेती से हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। अभी CSIR एरोमा मिशन एक चल रहा है, तो उसका जो नोडल लैब है वो सीमैप ही है। और एरोमा मिशन के अंतर्गत अभी जितनी भी हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो भी शेड्यूल ट्राइब्स जो ट्राइब्स एरिया था, ट्राइबल एरिया, वहां पे इसकी कल्टीवेशन इसकी स्टार्ट की गई है। और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन लेमन ग्रास की खेती से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है, जो कि अरोमा मिशन के अंतर्गत ये किया गया है। ये ऑरिगेनो एक प्लांट है, इसे मिड हिल्स में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जो भी हिली एरिया है वहां पे इसे ग्रो करने की संभावनाएं हैं। और अभी तक इंडिया में जो कंजप्शन हो रहा है ऑरिगेनो का, ऑरिगेनो बेसिकली इसे हम पिज्जा हर्ब के नाम से जानते हैं, और इंडिया में इसे ग्रो किया जा रहा है अभी सीमैप की मदद से। इससे पहले जो जो भी कंजप्शन था वो सारा का सारा यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करके लेके आया जाता है। और हम जो पिज्जा या जो भी इटालियन डिशेस खाते हैं, तो जो सीजनिंग अवेलेबल है वो सब यूरोपियन कंट्री से एक्सपोर्ट करके लाई जाती है। तो अभी सीमैप ने इसमें हस्तक्षेप किया है, और इंपोर्ट को रोकने के लिए और अपने जो भी फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया में ऑरिगेनो के लिए, वहां पे इसे ग्रो कराने के लिए पिछले साल सिम सुदीक्षा एक वैरायटी अभी डेवलप की हुई है सीमैप ने, जिसका जो एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो यहाँ हमारे सेंटर पे ही, यहाँ पहाड़ों पे किया गया है बागेश्वर में। तो इसकी खेती में अब किसानों को अब जोड़ा जा रहा है, और कई सारे किसान अपना स्टार्टअप्स, ग्रोअर्स और मैन्युफैक्चरर स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ उत्तराखंड में। एक जो प्लांट दिखाई दे रहा है ये थाइम, इसका इस्तेमाल हर्बल चाय के रूप में भी किया जा रहा है और सीजनिंग के रूप में भी किया जा रहा है। और जब कभी आप मैकडोनाल्ड जाएंगे वहां पे पिज्जा खाएंगे तो उसमें एक पाउच मिलता है जिसे सीजनिंग बोलते हैं। उस सीजनिंग में आपको रोजमेरी भी मिलेगा, थाइम भी मिलेगा,
ऑरिगेनो मिलेगा, और इसके अलावा बेसिल मिलता है। इन चार प्लांट को लीफ को मिक्स करके गार्लिक पाउडर में मिक्स करके वो सीजनिंग बनाई जाती है। तो ये चारों प्लांट हम इनकी वैरायटी डेवलप करके इनकी खेती जो भी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है हो सकती है हमारे देश में, वहां पे कल्टीवेशन कराने का काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मर्जोरम है, इसकी हर्बल चाय बनाई जाती है। लेमन बाम है, इसे अरब कंट्रीज में इसकी हर्बल चाय बना के बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है। एंटी डिप्रेशन टी के नाम से लेमन बाम बहुत ज्यादा फेमस है। जिसे नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में डिप्रेस जो पेशेंट होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल इसकी हर्बल चाय का किया जाता है। लेमन बाम का, ये मिंट फैमिली का ही ये प्लांट है। रोजमेरी का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया सीजनिंग के तौर पे किया जाता है। इसका ऑयल एरोमेटिक इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा इसकी हर्बल चाय बहुत ज्यादा फेमस है। आजकल हेल्थ के लिए जो भी हेल्थ के लिए जो जागरूक लोग हैं, हर्बल चाय इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो आजकल स्टार्टअप्स के रूप में जो भी स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं युवा, तो इसकी खेती पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और साउथ में जो हिली एरिया है वहां पे इसकी खेती आसानी से की जा रही है। ये प्लांट आपको एक दिखाई दे रहा है स्पीयरमिंट। स्पीयरमिंट जो है ये मिंट फैमिली का ही पौधा है और इसकी हर्बल चाय बहुत ज्यादा प्रचलित है। कैमोमाइल, ये एक जो इसका फ्लावर दिखाई दे रहा है कैमोमाइल, तो इसका ड्राई फ्लावर की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। ये बेसिल है, इसकी पत्ती की सीजनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी हर्बल चाय भी बनाई जाती है। ये सेलरी एक प्लांट है, इसका सीड की डिमांड रहती है। तो ये प्लेन मैदानी क्षेत्रों में लुधियाना में इसका कल्टीवेशन, ये बेसिकली ये पेरेनियल नेचर का प्लांट है, पर सीड प्रोडक्शन इसका किया जा रहा है लुधियाना में। तो एज ए एनुअल प्लांट इसकी खेती वहां पे की जा रही है सीड प्रोडक्शन के लिए। इसका सीड ऑयल का भी डिमांड होता है और कुलिनरी इंडस्ट्री में इसके सीड की भी डिमांड रहती है। और बेसिकली ये सैलेड क्रॉप है। तो इसका जो स्टेम पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसका जूस बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए। और इसका जो लीफ है इसका सैलेड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पार्सले क्रॉप आपको दिखाई दे रही होगी। सैलेड इंडस्ट्रीज, जितनी भी होटल इंडस्ट्री है उसमें सैलेड के लिए इसका इस्तेमाल अपने इंडिया में किया जा रहा है। तो इसकी कल्टीवेशन हिली एरियाज में की जा रही है। ये एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे दिल बोलते हैं। इसका कल्टीवेशन भी किया जा रहा है। और ये अब मैं अगर एनुअल कैटलॉग की बात करूं इसमें पूरे साल का, तो ये एनुअल इस हर्ब हैं, ये वाली जो एनुअल हर्ब हैं जैसे स्पीयरमिंट, कैमोमाइल, बेसिल और सेलरी। तो सेलरी, बेसिल और जो कैमोमाइल है ये सीड से इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो सीड से कल्टीवेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है सीड से इसकी नर्सरी तैयार करके इसका प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। और इसके अलावा जो स्पीयरमिंट है इसका सकर्स रूट पार्ट होता है। सकर को हमें चॉप करके बारीक काट के उसके बाद जनवरी में जैसे हमें इसका जैसे अगर हमें से फील्ड में सकर को डायरेक्ट हमें फील्ड में डालना है तो हमसे फरवरी में इसका हम डायरेक्ट फील्ड में सकर्स को चॉप करके डायरेक्ट फील्ड में हमसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अगर अब बात आती है कि हम इसका थ्रो सैपलिंग इसका हम ट्रांसप्लांटिंग करना चाह रहे हैं, तब इसकी नर्सरी हमें जनवरी में डालनी होगी और इसका जून में हार्वेस्टिंग हो जाता है। और कैमोमाइल जो है दिसंबर में, पहाड़ों में यहाँ पे हम लोग दिसंबर में नर्सरीज की डालते हैं। बेसिल की नर्सरी जून में डाली जाएगी और सैलरी की जो नर्सरी है वो जनवरी में डाली जाएगी। तो ये ये सारे के सारे एनुअल प्लांट हैं ये वाले। इसका जो लाइफ साइकिल है ये 1 साल के अंदर ये खत्म हो जाते हैं ये प्लांट। और नेक्स्ट ईयर इसका कल्टीवेशन करना है तो फिर से अभी सारा प्रोसेस नर्सरी वाला हमें फिर से करना होता है। ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहे होंगे जैसे यहाँ पे रोजमेरी है, लेमन ग्रास है, ऑरिगेनो है, थाइम है, मर्जोरम है, लेमन बाम है। कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें मुझे लग रहा है कि कुछ प्लांट्स के नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये जितने भी प्लांट हैं यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं, इनकी कल्टीवेशन किया जा रहा है। अभी हेल्थ के प्रति जागरूक जो लोग हैं इसकी हर्बल चाय जैसे रोजमेरी, ऑरिगेनो, थाइम, मर्जोरम, लेमन बाम, इसकी चाय यहाँ गूगल करके देखेंगे आप तो बहुत अच्छे रेट पे इसकी चाय मिल रही है। तो अब जब कंजप्शन यहाँ बढ़ रहा है तो इसकी खेती को बढ़ाने की जरूरत है। और ये जितने भी प्लांट हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये हिली एरियाज में बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। अब जैसे एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है लेमन ग्रास, इसे मैदानी एरियाज में बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। रोजमेरी का कल्टीवेशन आजकल आप मैदानी क्षेत्रों में भी नर्सरीज में रोजमेरी का
सैपलिंग आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। परंतु इसमें इशू ये रहता है कि केवल किचन गार्डन तक ही ये सीमित है, ओपन फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा सर्वाइव नहीं होता है, और इसका जो क्वालिटी है इसकी ड्राई हर्ब का वो बहुत अच्छा हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में प्रेफर नहीं किया जाता है, टेम्परेट रीजन का ही प्लांट है। तो बेसिकली जितनी भी हर्ब हैं मिड हिल्स में, हाई हिल्स में और फुट हिल्स में, तराई बेल्ट में बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, मैं लेमन ग्रास को छोड़ के। अब हम बात करते हैं, जैसे ये पेरेनियल नेचर के प्लांट हैं, हमने एक बार हिली एरिया में इनका प्लांटिंग कर दिया, तो प्लांटिंग करने के बाद आप जैसे रोजमेरी है 10 से 11 साल लगातार सेम फील्ड से, सेम प्लांट से, कुछ थोड़ी सी हमें केयर करने की जरूरत होती है, 10 से 12 साल हम हार्वेस्टिंग लगातार ले सकते हैं। सेम वही लेमन ग्रास की हार्वेस्टिंग 10 से 12 साल ले सकते हैं। ऑरिगेनो, थाइम, मर्जोरम, लेमन बाम ये 3 से 4 साल लगातार सेम फील्ड पे हमें हार्वेस्ट दे सकती हैं। अभी हिली एरिया में सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। तो अब जैसे ही फरवरी आएगा इसमें फिर से रीजर्मिनेशन होगा। सर्दियों में ये प्लांट सारे के सारे डोरमेंसी में चले जाते हैं। जनवरी निकलते ही फरवरी में ये फिर से इसमें रीजर्मिनेशन होता है, स्प्राउटिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको पहली कटाई मिलेगी, उसके बाद दूसरी कटाई आपको इसमें जून में मिलेगी, तीसरी कटाई अगस्त में मिलेगी। हिली एरिया कंडीशन में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जितना भी बेल्ट है हिली एरिया वाला, हिमालयन जोन वाला, तो यहाँ पे कल्टीवेशन अगर हम करते हैं तो इन हर्ब से हमें 3 कटाई मिलेगी अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ठीक से हम करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरी कटाई जब हम लेते हैं अगस्त में, उसके बाद क्या होता है सितंबर में आप देखेंगे कि ये पौधा बहुत ज्यादा वेजिटेटिव एरियल पार्ट, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करता है। तो होता क्या है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर आते ही यहाँ पे पाला गिरने लगता है, फ्रोस्ट इन्फेस्टेशन ज्यादा रहता है, और सीवियर फ्रोस्ट रहता है, और स्नोफॉल भी कई बार हो जाता है। तो स्नोफॉल जब हो जाता है तो इसे हमें फिर, जब टेम्परेचर इसका हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने लगता है, तो ये हमें फिर इसे लो टनल लगा के इसे बचाना होता है इन प्लांट्स को। तो जिस साल ज्यादा सर्दी रहती है उस साल हमें लो टनल लगा के इन्हें बचाना रहता है। तो ये थे स्पीयरमिंट, कैमोमाइल, बेसिल, लेमन बाम, रोजमेरी, ये इसकी टेम्परेचर रेंज है। अब जैसे आप इसमें एक चीज कॉमन आप देखेंगे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर रहा है। तो हमें जब टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा कम रहता है तो लो टनल लगा के हमें इसे बचाना रहता है। अब जैसे ये रोजमेरी का प्लांट है, इसमें स्नोफॉल हुआ है, स्नोफॉल होने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये प्लांट एकदम, इसकी जो लीफ है धीरे धीरे इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रही होंगी, ब्लैकिश ब्राउनिश होने के बाद ये डिफोलिएट हो जाता है। और जैसे ही फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगा फरवरी में जाके, सर्दियों के बाद, वैसे ही फिर से इसमें नई लीफ आने लग जाती हैं। तो अगर हमें इसमें मदर प्लांट को बचाना है फील्ड में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लो टनल में पॉलीथीन डालने के बाद इसे हमें प्लांट को बर्फ से बचाना होगा या फिर पाले से बचाना होगा। तो उसके लिए 5 mm का वायर एक आता है, 6 फीट का वायर जो एक आता है लंबाई वाला, वो हमें लेना है। 50 माइक्रोन का पॉलीथीन होना चाहिए। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपको उसे 3 फीट का स्पेस लेते हुए उसे हमने वायर को गाड़ देना है, और ये ऊपर से जो रोल दिखाई दे रहा है पॉलीथीन का वो डाल देना है इस तरीके से। तो जब हम 6 फीट वाले वायर का हम यूज करेंगे तो हमें 6 फीट तो इसकी ऊपर से हाइट मिल जाएगी, और 3 फीट इसमें हमें चौड़ाई इसकी मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि मदर प्लांट आपने फरवरी में आपने बचा लिया है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है टनल, इसे सर्दियां खत्म होते ही हटा देना है। हटा इसलिए देना है क्योंकि सर्दियां खत्म होते ही सन इंटेंसिटी पहाड़ों पे इतनी ज्यादा होती है कि टाइमली अगर हमने नहीं हटाया इन टनल्स को, तो होता यह है कि धूप इतनी ज्यादा होती है कि इसे गर्मी से ही पौधा जो टनल के अंदर है वो खराब हो जाएगा। तो टाइमली हमें इसे हटा देना चाहिए। अब आप फरवरी मार्च में देखेंगे तो इस तरीके का ब्लूम, रोजमेरी, इसे, ये जो हर्ब्स हैं, सारी हर्ब्स की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सेम हैं, इसे आप रोजमेरी से समझ लीजिए। ये जो रोजमेरी है इससे हमें अब मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिकेटियर की हेल्प से ब्रांचेस को कट करना है। 3 से 4 इंच हाइट वाली इस तरीके की हमें कटिंग तैयार कर लेनी है। और बिलो द, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है 2 इंच के करीब हमें इसकी जो लीफ है वो उसे हटा देना है। उसके बाद हमें पॉली बैग में गोबर की खाद और मिट्टी फिल करके उसके बाद इसे हमें पॉली बैग में ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है। इसे फिर से समझिए, 3 से 4 इंच का जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रांच, इसमें से हमें नीचे की 2 इंच की जो लीफ है रोजमेरी की उसे हटा देना है। और हटाने के बाद फिर हमें उसे तैयार करना है। ऐसे फिर से देखिए, हमने ब्रांच ली, सिकेटियर से कट किया इस तरीके का 3 से 4
इंच का ये आपको इसका लंबाई दिखाई दे रहा होगा ब्रांच का। उसके बाद हमने से 2 इंच हमने इसमें से पत्तियां हटा दी हैं नीचे से। और जो भी यूटेंसिल्स आप जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है, जितना आप कटिंग बना रहे हैं, वो कटिंग जितना भी आप बना रहे हैं उसी के हिसाब से आपका यूटेंसिल्स लेना है, पानी डालना है उसमें, कटिंग को बना बना के उसमें रखते जाना है। मतलब खुला इसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर जो मोटिलिटी है ज्यादा होगी, सर्वाइव होने के चांसेस कम होते जाएंगे जितना आप इसे बाहर रखेंगे। इस प्रोसेस को पल्सिंग बोला जाता है बेसिकली। उसके बाद आप गोबर की खाद और मिट्टी वाले पॉली बैग में से आप इसे ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में रखे हुए रोजमेरी है। आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको इरिगेशन करते रहना है, और 25 से 30 दिन में ये रोजमेरी और इसके अलावा जो भी हर्ब मैंने अभी डिस्कस करी, 25 से 30 दिन में सारी की सारी लगभग तैयार हो जाती हैं। अगर आपको देखना है कि ये हर्ब तैयार हो चुकी हैं, तो उसके लिए आपको कुछ आपको जो सैपलिंग है इसमें से कुछ को पुल आउट करके देखेंगे, तो आपको देखेंगे कि आपने 3 से 4 इंच वाली जो लगाई हुई थी कटिंग, उसमें रूट जोन नहीं है, और 25 से 30 दिन में इस तरीके का रूट जोन उसमें डेवलप हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका जो पौधा है वो ट्रांसप्लांटिंग के लायक तैयार हो चुका है। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद 50 इंटू 50 सेंटीमीटर पे आपको इस तरीके से मार्किंग करके पौधा लगाने के लिए मार्किंग कर लेना है। इसमें जो डाया होगा इसका 4 से 5 इंच का होगा, और 6 इंच का इसमें गहराई होगा इसका गड्ढे का। उसके बाद इसमें गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सचर बना के रखना है। ये जो पौधा बैग में तैयार हुआ है उसे आपको इस तरीके से इसकी पॉलीथीन को हटा देना है। और ये एक पहाड़ों पे फार्मर के यहाँ का एक पिक्चर है, गढ़वाल में, उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र का। तो ये इस तरीके से इन पौधों को लगा देना है। ये कुछ डिटेल है प्रोपोगेशन की। अब इसमें से आप मोस्टली प्लांट का आप देखिए, रोजमेरी, लेमन ग्रास और थाइम, मेजोनाना, लेमन बाल्म, मिंट, कैमोमाइल, सैलरी, 25 से 30 दिन में ये सारे के सारे तैयार हो जा रहे हैं। और ये कुछ डिटेल है केमिकल कंपाउंड। रोजमेरी में साइमिन और लिनालूल होता है, लेमन ग्रास में सिट्रॉल लिनालूल होता है, ऑरिगेनो में कार्बिकॉल होता है। हाई जो मेजर में केमिकल कंपाउंड है, थाइम में थाइमॉल होगा, लेमन बाम में सिट्रॉल होगा, कैमोमाइल में इस तरीके, ये जैसे सैलरी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें फर्फुलिक एसिड होता है, कार्बिकॉल स्पीयरमिंट में मिलेगा। तो ये जितना भी मेजर केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, ये इसके इसेंशियल ऑयल में पाए जाते हैं। और इसेंशियल ऑयल उसकी उच्च अवस्था में होना चाहिए। जो भी हम प्लांटिंग मटेरियल हम प्लांट करेंगे, उसके बाद इसका हम पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के बाद जब हम इसकी कटाई करेंगे, तो इसमें इसकी उच्च अवस्था में इन पौधों की इसेंशियल ऑयल होना चाहिए, जो कि वोलेटाइल नेचर का होता है। उसका हम डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करने के बाद हम ऑयल की मात्रा का पता करते हैं, और उसके बाद जो एक प्रोसेस होता है केमिकल एनालिसिस का, जिसे जीसी बोलते हैं, उसमें हमें जो भी मेजर केमिकल कंपाउंड है उसकी कुछ जितनी भी जो हाई उच्च अवस्था में होना चाहिए, और इसी से डिसाइड होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है कितनी अच्छी क्वालिटी का है। अ, अब बात आती है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि कटाई, जैसे आपने प्लांटिंग कर दी थी, प्लांटिंग करने के बाद आपको जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो यहाँ बताई है मैंने, प्लांटिंग करना है, उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे आपको इरिगेशन करना है, वीडिंग करना है, और उसके बाद टाइमली इसका जो मैंने बताया अभी, कब कब इसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है, तो वो हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है, मैं आपसे अभी इसमें आगे डिस्कस करूंगा अभी। तो आपको जो सबसे पहले रॉ मटेरियल जो होगा, उसका जो मार्केट में रेट डिसाइड होगा जब, तो वो होता है इसकी गुणवत्ता के आधार पे। तो गुणवत्ता को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो गुणवत्ता को मैंने बताया कि कैसे डिसाइड करते हैं। वो आउटर क्वालिटी और इनर क्वालिटी, दो तरीके की इसकी क्वालिटी होती हैं। और ये मेंटेन तभी हो सकता है जब आपने रोपाई से लेके कटाई तक जो भी प्रोसेस है, वो सारा जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक से की हुई हैं। उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, प्राइमरी प्रोसेसिंग, वो सारे के सारे जितने भी इसके मानक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसे फॉलो करेंगे, तभी हम जाके हाई क्वालिटी का इसमें हम रॉ मटेरियल तैयार कर पाएंगे। तो अब इसकी जो क्वालिटी होती है, दो टाइप से हम इसे डिसाइड कर सकते हैं। एक तो होती है आउटर क्वालिटी, जैसे रोजमेरी की जो पत्ती है, सीजनिंग के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो कलर है हरा होना चाहिए, तो वो जो हरा कलर है वो नहीं होगा तो उसकी क्वालिटी बेकार है। मतलब जो आउटर क्वालिटी है, जो हमें आंखों से दिख रहा है, नाक से हम जिसे सूंघ रहे हैं,
तो वो अगर बेकार होगा तो आउटर क्वालिटी बेकार होते ही आपका जो रॉ मटेरियल का जो रेट है वो नहीं आपको मिलेगा मार्केट में। तो आंखों से देखने में और नाक से सूंघने में जो चीज हमें पता पड़ती है वो आउटर क्वालिटी होती है। तो इसमें आंखों से देखने पे हमें लीफ का साइज पता पड़ सकता है, या फिर स्टेम का साइज पता पड़ सकता है, कलर क्या है इसका वो पता पड़ जाएगा, किसी तरीके की इसमें इम्प्योरिटीज तो नहीं है वो इसमें हमें पता पड़ सकता है, किसी तरीके की और अदर स्पीसीज तो इसके अंदर नहीं आ गई हैं वो हमें मालूम पड़ सकता है। तो ये चीजें जो आंखों से दिखाई देती हैं, पहली चीज आंखों से जो दिख रही है वो उससे रेट डिसाइड होता है। उसके बाद दूसरा हमें इसके बाद इसे हमें एरोमा चेक करनी है। एरोमा चेक करने के लिए इसमें बहुत अच्छी एरोमा आती है, जितनी भी हर्ब हैं, रोजमेरी, ऑरिगेनो, थाइम, लेवेंडर, ये जितनी भी हर्ब हैं इसमें अच्छी एक एरोमा आती है। जैसे ही रब करेंगे थोड़ा सा बहुत अच्छी एरोमा आनी चाहिए। अगर एरोमा नहीं है तो मान लीजिए कि आपका जो भी रॉ मटेरियल आपने खेत में काटने के बाद सुखाया है, तैयार किया है, वो सारा का सारा बेकार है, आपको उसका रेट बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। दूसरा, जो अगर आपका आउटर क्वालिटी अच्छी है तो उसके बाद आपको जो खरीदार है इनर क्वालिटी चेक करेगा। इनर क्वालिटी चेक करने के लिए क्या करेगा, वो ऑयल परसेंटेज चेक करेगा। मतलब आपने मान लीजिए 100 kg लीफ रोजमेरी की तैयार की हुई है, तो उसमें से वो कुछ सैंपल आपका ले लेगा। उसके बाद वो ऑयल परसेंटेज डिस्टिलेशन के द्वारा पता करेगा। और गैस क्रोमेटोग्राफी एक तरीका है, इसमें केमिकल कंपाउंड जो भी होते हैं उसे जानने का, तो वो चेक करेगा। उसके बाद आपका रेट डिसाइड किया जाएगा हर्ब का। आउटर क्वालिटी मैंने बताया, कलर, शेप, लीफ का, क्लीनिंग अगर किस तरीके की, सफाई किस तरीके की है, उसमें अच्छी अरोमा आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये आउटर क्वालिटीज होती हैं। अब जो इसमें आपका रॉ मटेरियल है, इसमें आपका हाई कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, सक्रिय अवयवों की अधिकता जो है वो उसकी उच्च अवस्था में होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि जैसे कि आपका ये स्पीयरमिंट, पेपरमिंट जो एक प्लांट होता है, उसमें 1.5% के करीब ड्राई हर्ब में उसका ऑयल होना चाहिए, और जो फ्रेश हर्ब होगी उसमें 0.9% के करीब उसमें ऑयल होना चाहिए। तो ये अगर उसमें नहीं है तो मान लीजिए कि आपका जो रेट है रॉ मटेरियल का वो उतना नहीं मिलेगा। या फिर जो कुछ युवा स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का उससे नहीं बनेगा। इसमें जो प्योरिटीज है वो उसकी उच्च अवस्था में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल आपने तैयार किया हुआ है, जैसे फॉर थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि ऑरिगेनो हमारा एक प्लांट है, सीजनिंग हर्ब है, उसमें पत्ती की रिक्वायरमेंट है और स्टेम की भी रिक्वायरमेंट है। तो अब जैसे खरीदार को किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए केवल पत्ती की जरूरत है और उसे स्टेम नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, जैसे आपने 100 kg हर्ब आपने तैयार किया हुआ है, ड्राई हर्ब, तो वो क्या करेगा, आपकी सैंपल जो भी आपका सैंपल है उसमें से 100 ग्राम या आधा किलो के करीब सैंपल ले लेगा, और उसमें वो जो इम्प्योरिटीज है उन्हें अलग निकाल लेगा और उसे तौलेगा। तौलने के बाद उसका रेट डिसाइड किया जाएगा। अगर उसमें 2% से ज्यादा इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं तो हो भी सकता है कि आपका वो खरीदार आपका ड्राई हर्ब ना भी खरीदे। इसमें ये लो माइक्रोबियल लोड इसमें होना चाहिए, किसी भी तरीके से इसमें माइक्रोबियल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। वो अगर है तो जो भी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं रॉ मटेरियल को नहीं लेती हैं। वो इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि इसमें स्टरलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद वो लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट वाली, वो सारी की सारी जो भी मानक बने हुए हैं इसके, वो सारे के सारे फॉलो करने हैं और उसके बाद ही इसकी खेती करने हैं, जिससे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी कोई भी आपके ड्राई हर्ब में ना हो पाए। अब जैसे ये फ्री ऑफ रेजिडुअस होना चाहिए। फ्री ऑफ रेजिडुअस हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो जितना भी खेती है, ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही हमें करना है। इसके लिए हमें ये करना है कि खेत को जो हम चयन करेंगे वो आपका एक तो जिसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया गया हो, और ऐसे क्षेत्र में करेंगे जहां आसपास भी केमिकल यूज ना किया जा रहा हो। जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज में एक ये फार्म का एक फोटो है जिसमें दिखाई दे रहा है आपको ऑर्गेनिक फार्म, येलो पट्टी पे लिखा दिखाई दे रहा होगा, प्लीज डू नॉट स्प्रे, वॉच विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये कह रहा है कि इसमें हवा का जो फ्लो है वो देख के ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। तो
हमें इसी तरीके से ध्यान रखना है कि कोई भी अगल बगल में अगर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहा है तो उसे रोकना है। अगर वो नहीं रुका, हवा के साथ भी इंसेक्टिसाइड आपकी इन हर्ब्स पे आता है तो उसका रेजिडुअस इफेक्ट होता है, और इसका मल्टीपल रेजिडुअस स्क्रीनिंग एनालिसिस ये बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं करती हैं। उसमें एक रेजिडुअस लेवल होता है, उससे ऊपर अगर कोई भी हर्ब जाती है तो इसे यूज नहीं किया जा सकता है। इस तरीके की एक्टिविटी से बचना है जिससे कि कंटेमिनेशन किसी भी तरीके से आपकी हर्ब में, प्लांट में किसी भी तरीके से ना पहुंचे। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास का जो एरिया है उसे नहीं लेना है। अब ये आपका सेकंड इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देख रहे हैं कि किसी भी इसमें कोई भी निराई गुड़ाई या फिर जो जुताई जो की जाती है वो इसमें ठीक से नहीं की गई है। इस तरीके के प्लांट में कल्टीवेशन नहीं करना है। कटाई होने के बाद ये जो हर्ब है ऐसे इस तरीके के एरिया में नहीं सुखाना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अलग ही इसमें पूरे एरिया में कुछ गंदगी से भरा हुआ ये एरिया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो ये है कि गुणवत्ता जो मानक है उसे कैसे पूरा किया जाए। तो माइक्रोबियल लोड को कम करते हुए हाइजीनिक तरीके से हमें खेती करनी चाहिए। दूसरा, जो भी कटाई से पूर्व और कटाई के उपरांत जो भी प्रोसेस होता है, स्टोरेज से लेके प्राइमरी प्रोसेसिंग, वो सारी की सारी हमें मानकों के अनुरूप करना है। ये कुछ उसके लिए हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि साफ सफाई इसका ध्यान रखना है। जो भी फार्मर वर्कर खेत में इन्वॉल्व हैं वो उनके हाथ साफ होने चाहिए। किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की बीमारी से वो ग्रसित नहीं होने चाहिए। इन्फेक्शन वाली कोई बीमारी उनके पास नहीं होनी चाहिए जो कि जिससे कि हर भी इन्फेक्टेड हो जाए, क्योंकि ये जितने भी ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हैं, वायरसेस हैं, उन्हें ना तो देखा जा सकता है, ना उन्हें सूंघा जा सकता है, ना उनमें स्वाद उनका लिया जा सकता है। तो बस ध्यान यही रखना है कि साफ सफाई हमें रखनी है। अब हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक आपको दिखाई दे रहा होगा, सिकल बार मूवर। तो लार्ज स्केल पे जब हम खेती करते हैं तो इसका इस्तेमाल अब किया जाने लग गया है। ये मेंथा का एक क्रॉप है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश का ये एक फील्ड का फोटो है। इसमें कल्टीवेशन करने के बाद कटाई जो है हंसिए से की जा रही है। तो मैनुअली कल इसका जो हार्वेस्टिंग है अभी हमारे इंडिया में ज्यादा किया जाता है, परंतु अभी इस तरीके की कुछ डिवाइस, सिकल बार मूवर जिन्हें बोलते हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान ये रखना है, इस तरीके का हंसिया अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली बाराबंकी में ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है मेंथा का, तो उसमें कटाई करने के बाद सीधा डिस्टिलेशन किया जाता है तो उसमें चल जाता है। जब बात आती है कि आपको हर्ब, ड्राई हर्ब आपको तैयार करनी है और उस हर्ब से प्रोडक्ट बनाना है, या फिर प्रोडक्ट जो भी बना रही है कंपनी उन्हें वो हर्ब बेचनी है, तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी औजार आप इस्तेमाल करेंगे उसे आप बहुत अच्छे से साफ करके, धो के, साफ करके, उसे सुखा के उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसे गंदे हथियार से आप बेकार हथियार जिसमें आप माइक्रोबियल एक्टिविटी है, गंदगी उसमें लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, ऐसे किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी क्वालिटी जो है डिक्रीज होगी ड्राई हर्ब की। ये कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। रूट के लिए आपको, जैसे जड़ों वाली कुछ हर्ब है उन्हें पूरा उखाड़ना है तो उसके लिए मैनुअल रूट लिफ्टर होता है ये वाला, और ये वाला रूट डिगिंग मशीन है नीचे आपको जो दिखाई दे रही है। ये वाइब्रेट होती है, रूट के किनारे किनारे आपको इसे अंदर तक प्रेस करना है और पूरा प्लांट निकल के बाहर आ जाता है। अभी फावड़े का इस्तेमाल अगर आप करते हैं थोड़ी देर के लिए, सोचिए जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, सफेद मूसली, सतावर, ये सारे के सारे इनका जो कॉमर्शियल पार्ट होता है वो रूट होता है। तो इन्हें अगर हम फावड़े से उखाड़ते हैं तो ये कई बार होता ये है कि जड़ें नहीं पता पड़ती हैं, वो कट जाती हैं। जब वो कट जाएंगी तो आप सीधी सा मतलब अंदाजा लगा लीजिए कि आपका जो रेट है आपको मार्केट में वो नहीं मिलने वाला है। ये फ्लावर का कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश का ये फोटो है। हिमाचल प्रदेश में इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में खेती की जा रही है जहाँ मैनुअल हार्वेस्टिंग की जाती है। ये अपने इंडिया में लेवेंडर का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो हार्वेस्टिंग है वो मैनुअली किया जाता है। ये एक यूरोपियन कंट्री जो है एक उसका फोटो है ये वाला। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एक लेवेंडर हार्वेस्टर, आप ये वाला जो फोटो देख रहे हैं इसमें लेवेंडर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इसमें की जा रही है। एक फोटो आप कैमोमाइल का देख रहे होंगे जिसमें मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की जा रही है। अपने इंडिया में अभी सीमैप ने एक डिवाइस बनाई हुई है, ये वाली, ये जो डिवाइस है
जिसमें कंघी की तरह से कुछ एक डिवाइस तैयार की गई है। इसमें होता क्या है, कैमोमाइल में ड्राई फ्लावर की डिमांड ज्यादा होती है, और होता यह है कि 1 महीने लगातार तुड़ाई करनी होती है इन फूलों की, तो लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है। उसके लिए हाथों से तुड़ाई ना करनी पड़े, तो उसके लिए इस तरीके की डिवाइस एक तैयार की गई है। तो अब जैसे बात अब की जाए, अब हम हमें हमें कटाई का जो समय है उसके बारे में अगर हम बात करें कि कटाई हमें कब करनी चाहिए लीव्स की, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि जो ड्राई हर्ब हमें अगर तैयार करनी है, तो उसके लिए उन फसल में फ्लावरिंग से पहले हमें कटाई कर लेनी है। फ्लावर की अगर डिमांड है, तो फ्लावर जो है पूरी तरीके से खिला हुआ होना चाहिए, उसमें धूप अ, दिन के समय में धूप आ जानी चाहिए, तब हमें करना है। और इस फ्रूट की अगर हम बात करें, तो फ्रूट पूरी तरीके से मैच्योर हो जाना चाहिए। और अगर हम रूट की बात करें, तो ये रूट वाले जितने भी पौधे हैं, करीब करीब 9 से 12 महीने का टाइम लगता है, और उसके बाद इसमें जो एरियल पार्ट होता है वो लगभग खत्म हो जाता है। तो तब मान लीजिए कि इसमें हमें इसकी कटाई करनी है। हमें कब नहीं करना है इसमें कटाई, बारिश के समय पे नहीं करना है, इसमें ओस जब आती है तब नहीं करना है, फील्ड में मॉइस्चर का लेवल जब ज़्यादा है तब नहीं करना है, हाई ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना है, तब हमें इसकी हार्वेस्टिंग इन कंडीशंस में नहीं करनी है। तो अब हम कटाई करने के बाद हमें क्या करना होता है, कटाई करने के बाद जैसे ये एक फसल आपको लेमन ग्रास दिखाई दे रही होगी, तो इसमें हमें जितनी भी हर्ब्स हैं, इसमें हमें ध्यान ये रखना चाहिए, जैसे फूल वाली जितनी भी फसलें हैं, जैसे कैमोमाइल की मैं बात कर रहा था, या जितनी भी ये हर्ब हैं, बहुत टाइटली इन्हें नहीं बांधना है। टाइटली बांधेंगे तो इसमें एक बहुत टाइटली अगर हम बांध देंगे, तो इसमें ब्लैक कलर की पत्तियां सुखाएंगे, जब ब्लैक कलर की पत्तियां हो जाती हैं, तो हमें विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और कब नहीं करना है, कटाई के बाद जो आपका ड्राई हर्ब है उसे हमें धूप से बचाना है, कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, और जो सामग्री है, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, वो बारिश के एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए। और हमें इसे तब काटना चाहिए जब आपकी जो भी खरीदार है उससे आपकी बात हो चुकी है, तो सीधा काटना है। काट के अगर या तो वो रॉ मटेरियल आपका अपने अपने यूनिट पे सुखाएगा, तो उसे आपको डायरेक्ट दे देना है, और अपने ही फील्ड पे आप सुखाना चाह रहे हैं, अपने ही यूनिट पे आप सुखाना चाह रहे हैं, तो वो करना तभी है जब आप की खरीदार से बात हो चुकी है। ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, एक ये इमेज है, अ, ये कैमोमाइल की इमेज है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये फील्ड में जब आप खड़े होंगे, तो देखेंगे कि एक सफेद कलर का पूरा फील्ड दिखाई देना चाहिए, तो मान लेना चाहिए कि ये फसल तैयार हो चुकी है। फुल ब्लूम कंडीशन है ये फ्लावर की, कैमोमाइल की। ये जो प्लांट है, ये वाला लीफी पौधा है, ये पेपरमिंट मेंथॉल मिंट ये पौधा है ये वाला। तो इसमें जो इंडिकेशन है इसकी मैच्योरिटी का, वो ये है कि इसमें जो नीचे बिलो द प्लांट जो लीफ होती हैं, वो येलो कलर की हो जाती हैं। ये कैमोमाइल की मैं बात कर रहा था। कैमोमाइल में इसमें 3.5 mm से लेके 4.5 mm इसमें स्पेस होता है। तो इसमें 3.5 mm स्पेस है, तो मान लीजिए कि 3.5 mm वाला जो फ्लावर है, इस तरीके का जो डिवाइस है, मैनुअल हार्वेस्टर इसे बोलते हैं, तो इसमें इतने ही साइज का फ्लावर इसमें आ जाता है। तो इसमें होता यह है कि आपका लेबर कॉस्ट बचेगा। और मैनुअल जो हार्वेस्टिंग के अलावा मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की बात करें, तो वो अपने इंडिया में नहीं अभी हो रहा है। और 360 एक हेक्टेयर में 360 घंटे के करीब इसमें हमें देने होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की, तो वो केवल 3 घंटे में एक हेक्टेयर में की जा सकती है। ये इस तरीके का आपको फ्लावर आपको दिखना चाहिए पूरे फील्ड में व्हाइट। और मैनुअल हार्वेस्टर जो आपको दिख रहा है, उससे आपको इस तरीके से हार्वेस्टिंग करनी है। हर तीसरे दिन आपको इससे तुड़ाई करनी है। बहुत ज्यादा ये टोकरी जो दिखाई दे रही है, या जो भी आपका बोरी बैग ले रहे हैं, उसमें बहुत टाइटली इन फूलों को नहीं डालना है। उसके बाद ये जालीनुमा जो रेक दिखाई दे रही है, इसमें आपको सुखा लेना है इसे। और सूखने के बाद इस तरीके का एक अच्छा सा येलो कलर ड्राई फ्लावर का तैयार हो जाता है। अगर इस तरीके का फ्लावर तैयार कर रहे हैं आप, तो समझ लीजिए कि इस कैमोमाइल की जो हर्बल चाय बन के तैयार होगी, वो किसी भी मतलब की नहीं होगी। उसमें एरोमा बहुत अच्छी नहीं आएगी, इसमें एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छी मात्रा में नहीं होगा, और जो केमिकल कंपाउंड है इसके, वो भी बहुत अच्छी मात्रा में नहीं होंगे।
तो ये इस तरीके का जो फ्लावर का कलर है वो इसलिए आया है इसमें, क्योंकि इसमें बेसिकली होता ये है कि आपको काटने के बाद 2 घंटे के अंदर ही इसे सुखाना होता है। ये अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका जो कलर है ब्राउन हो जाएगा। अगर इस टोकरी में हमने दबा दबा के भर दिया है बहुत ज्यादा, तो तब भी ये एक कंडीशन है कि आपको ब्राउन कलर का इसमें हमें फ्लावर मिलेगा। सुखाने के लिए हमें करना ये होता है इसमें कि एक तो जमीन में नहीं सुखाना है, दूसरा इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए इसमें, हमें ये ध्यान रखना है। इसका नेचुरल कलर मेंटेन रखना है और इसमें जो मॉइस्चर है वो 10 से 14% के करीब होना चाहिए। तो ये इस तरीके की जो रेक आपको दिखाई दे रही हैं, ये वुडन की रेक है, आयरन की रेक हो सकती हैं, और इसमें जो भी कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें जालियां लगी हुई हैं जिससे कि एरेशन आपका ऊपर से नीचे से सर्कुलेट हवा होती रहे। तो हर्ब आपकी तैयार हो गई है, उसे आपने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपको इसे शेड ड्राई करना है। तो शेड ड्राई सबसे अच्छा तरीका हम लोगों ने यहाँ पे एक इजाद किया हुआ है, शेड ड्राई विद एयर। तो ये लो कॉस्ट तरीका है, किसानों को हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं। किसी भी तरीके की हमें इसमें किसानों को किसी भी तरीके की बहुत ज्यादा लागत खर्च नहीं करनी पड़ती है। इसकी खेती आसानी से यहाँ पे की जा रही है, उसके बाद आसानी से इसे सुखाया जा सकता है। तो ये तरीके से अगर हम खेती करते हैं और इस तरीके से खेती करने के बाद हर्ब को सुखाते हैं, हरे कलर का हमें ड्राई हर्ब मिल जाता है। ये मॉइस्चर कंटेंट है इन सारी हर्ब्स का, जो कि दिखाई दे रहा है 10 से 12% इसमें मॉइस्चर, 10 से 12% तक ही इसमें मॉइस्चर रखना होता है। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि ये जितनी भी रोजमेरी, लेमन ग्रास, थाइम, ऑरिगेनो, मेजोनाना, लेमन बाम, ये जितनी भी हर्ब हैं, इसे हमने एक कमरे में, वेंटिलेशन वाला जो कमरा है, शेड ड्राई मैंने बताया, तो ये जो शेड ड्राई हम कर रहे हैं तो हमें करना ये है कि इस तरीके की रेक का इस्तेमाल करना है जिससे कि एरिया का यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छे से किया जा सके। तो पहला तो यूटिलाइजेशन एरिया का इन रेक से ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, ये जो रेक है इनमें सुखाने से ये जो जालियां लगी हुई हैं आपका प्रॉपर एरेशन होता रहेगा। और हमेशा सुखाते समय शेड ड्राई अगर हम कर रहे हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन का यूज करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि ये जैसे आपने 100 kg मान लीजिए कि आपने इसमें ऑरिगेनो डाला हुआ है सुखाने के लिए शेड ड्राई में, और वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, तो होगा ये इसमें कि सूखने के बाद 100 किलो, जैसे ऑरिगेनो जो है सूखने के बाद करीब आपका 80 किलो जो है उसमें वाटर कंटेंट होता है, और सूखने के बाद वो 20 kg रह जाता है। तो 20 kg जब हमें ड्राई हर्ब मिल रहा है तो 80 लीटर के करीब जो पानी है वो अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो वो इसी एरिया में सर्कुलेट होता रहेगा, वहां पे ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी उस एरिया में और वो हर्ब आपकी काली पड़ जाएगी। तो हमें ध्यान यही रखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो। और ये इसका एक रेशियो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे रोजमेरी का 4:1 है, लेमन ग्रास का 6:1 है, 4:1 ऑरिगेनो का है, थाइम का 5:2। जो ये रेशियो दिखाई दे रहा है, ये रेशियो खेती करने से पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे 4 kg आप हर्ब सुखाएंगे तो मान लीजिए कि आपको 1 kg उसमें हर्ब मिलने वाली है। ऑरिगेनो में 4 kg सुखाएंगे तो 1 kg मिलने वाली है। तो ये हर्ब का रेशियो अगर आपको पता है तो आपको पता रहेगा कि ये जो भी आप कल्टीवेशन करने वाले हैं कितने एरिया में करें, जिससे कि आपको जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो पूरी हो जाए। ये फ्लावर का टेम्परेचर रेंज है जिसमें सुखाया जाता है इसे, ये सीड का है। तो इसमें आप देखेंगे कि रूट में 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड सीड में है। तो फ्लावर और एंटायर हर्ब है वो 40 से 45 डिग्री से ऊपर अगर हम लेके जाएंगे तो इसमें केमिकल कंपाउंड और इसेंशियल ऑयल जो है उसकी मात्रा खत्म होती जाएगी, इसकी एरोमा भी खराब होगी और इसका कलर भी बेकार हो जाता है इन हर्ब्स का। उसके बाद अब इसकी कुछ ये इसके इंडिकेशन है, जैसे हर्ब आपकी सूख चुकी है तो जो स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, स्टेम आसानी से टूट जाना चाहिए। अगर वो नहीं टूट रहा है आसानी से तो मान लीजिए कि इसमें मॉइस्चर परसेंटेज पर्टिकुलर क्रॉप का जो बताया जा रहा है वो उससे ज्यादा है। तो ध्यान ये रखना चाहिए कि एकदम क्रिस्पी होना चाहिए, तुरंत टूट जाना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि ये जड़ वाला पार्ट है तो जड़ वाला जो पार्ट है वो आसानी से अंदर से हार्ड होना चाहिए। अगर वो ज्यादा मोटी जड़ है तो वो बहुत हार्ड होनी चाहिए, और अगर पतली जड़ है तो आसानी से टूट जानी चाहिए। फ्लावर हेड जो है बहुत चूने में हार्ड होना चाहिए ये वाला, और सीड है अगर उसे हम दबाते हैं तो वो एकदम ठोस होना चाहिए। तो ये सब कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी ड्राई हर्ब मान लीजिए कि सूख के तैयार हो चुकी है, सूख के आप तैयार हो गई है, आपने सारा का सारा जो भी मानक
इसके स्टैंडर्ड्स हैं उसे फॉलो कर लिया है, किसी भी तरीके से माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं है, अडल्ट्रेशन नहीं है, धूल कंकड़ कुछ भी आपने नहीं अपने हर्ब में आने दिया है, उसके बाद भी आपको लग रहा है सूखने के बाद, तो फिर से सॉर्टिंग टेबल पे ले जाके उसे आप क्या करेंगे कि फिर से आप उसे सूखने के बाद उसमें देखेंगे कि कुछ पत्तियां अगर रह गई हैं काली या फिर डिजीज वाली, तो उन्हें फिर से हटा देना है। उसमें किसी भी तरीके का मोल्डी प्लांट पार्ट ना हो, स्टोन ना हो, वीट ना हो, अनप्योरिटीज कोई ना हो। उसके बाद फिर हमें इसे पैक करना होता है। पैक करने के लिए हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी एरिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कमरे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, वो आपका प्रॉपर एयर टाइट होना चाहिए। उसमें मॉइस्चर जो है 60% से कम होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, व्हाइट कलर की उसमें पेंट होने चाहिए, जो भी इंट्रेंस है वहाँ जालियां लगी हुई होनी चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और ये जो बैग दिखाई दे रहे हैं, ये एयर इसमें एयर टाइट बैग होते हैं, इसमें हवा का आवागमन नहीं होता है। तो ये जो हर्ब है इन्हें इन्हीं बैग्स में रख के अच्छे रूम में रखना है, डार्क रूम में रखना है, धूप नहीं आने देनी है और हवा के टच में ये हर्ब नहीं आएंगी, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अभी जो तीसरा दिन है, और अभी का जो सिचुएशन है उसमें अगर हम देखें तो युवा जो हैं अभी स्टार्टअप्स की तो और स्टार्टअप्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो हर्बल जो मैंने हर्ब्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया, इन हर्ब्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अभी जो भी डिमांड हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, वो जो भी डिमांड है हमारी, वो इतनी नहीं है कि जो कंजप्शन है उसे हम पूरा कर सकें। तो होता ये है कि अपने इंडिया में अभी यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे मंगाया जा रहा है। तो इंपोर्ट को हमें रोकना है और इसकी कल्टीवेशन को यहीं से हमें पूरा करना है। तो एक अपॉर्चुनिटी की तौर पे ये हब्स हो सकती हैं। इसे आसानी से उगाया जा सकता है और इससे हमें सीजनिंग हम इनसे बना सकते हैं, हर्बल चाय बना सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट इनसे तैयार किए जा सकते हैं। तो अब दूसरा ये जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं जिन्हें नहीं पता है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स उनके कोर्स वर्क में होता है, उन्हें नहीं पता होता है, तो मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि उन्हें इन प्लांट्स के बारे में एक बेसिक समझ उनकी विकसित हो पाई होगी। और आज तीसरा दिन है, सभी लेक्चर बहुत अच्छे हुए। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एग्रीकल्चर से किस तरीके से स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर यहाँ पे आज हुए हैं। और किसी को अगर पूछना है, कुछ जानना है, तो ज़रूर अपने सवाल रख सकते हैं। If anyone has any question, then please drop in the chat box. Yes, Praval sir, all the plants found in the nature have some medicine or other useful properties, obviously. And by doing the scientific method based cultivation of the culinary herbs, we can not only raise our economic level, but can also increase the self reliance by the reducing their exports from the country. Any question? No doubt your presentation was extraordinarily explanatory. And here is a question from, I think, from Dr. Arvind Pal Singh. Uh, okay, we used to hear in our childhood Binaksha. Binaksha, yes. What is it? Are these available today? Sir, do you know about the Binaksha? ये ट्रेडिशनल प्लांट है। ये हम लोग इसका कल्टीवेशन या फिर इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। ये जूस इसका बनाया जाता है और ये ड्रिंकिंग जो भी बेवरेजेस है उसमें इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। इसका कल्टीवेशन हम लोग नहीं करा रहे हैं, ना ही इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी पे सीमैप का कोई काम है। हम लोग ऐसे प्लांट पे वर्क करते हैं जो कि कॉमर्शियल स्केल पे जिसका कल्टीवेशन हो रहा है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को जिसकी डिमांड रहती है, तो उस पे हम लोग का कल्टीवेशन और एग्रो टेक्नोलॉजी पे वर्क है। बेसिकली ये टिपिकली जड़ी बूटी में कंसीडर किया जाता है ये प्लांट, तो इस पे हम लोगों का कोई वर्क नहीं है।
Okay, one question is also there, sir, from the Danish. Price of these herbs and economic benefits per hectare. उसके लिए जैसे अभी मैं बात करूं, यहाँ पहाड़ों पे हम इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी को डेवलप करके यहाँ पे एक्सटेंशन वर्क जो कर रहे हैं किसानों के साथ, तो इसमें यहाँ पे पहाड़ों पे आप कहीं भी जाएंगे तो यहाँ पे जो इसका जो नापने का एरिया है जमीन का, तो वो 200 मीटर स्क्वायर से है, उसे नाली बोलते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। और तो अगर हम बात करें जैसे रोजमेरी की कल्टीवेशन की, तो रोजमेरी का कल्टीवेशन कोई किसान करता है तो 200 मीटर स्क्वायर का एक छोटा सा टुकड़ा से ही अगर खेती शुरू करता है तो उसे 6,000 रुपया करीब करीब एक साल में मिल जाता है। और एक नाली, अब जब 10,000 मीटर की हम बात 10,000 मीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 6,000 से मल्टीप्लाई उसे किया जा सकता है। तो अच्छा इनकम इसमें जनरेट हो जाता है, और करीब करीब 30 कुंटल हर हम एक हेक्टेयर में इससे हम रोजमेरी से ले सकते हैं। और इसमें करीब 250 से 300 केजी, 250 से 300 रुपया करीब करीब 1 केजी का इसका रेट है। यही सेम ऑरिगेनो का है, कैमोमाइल का 300 से 400 रुपए पर केजी इसका रेट है। अच्छा इसका रेट मिल रहा है ड्राई हर्ब का, इसका ड्राई हर्ब का, फ्लावर का 300 से 400 की रेंज में सारे के सारे इसकी हर्ब मार्केट में होलसेल रेट है इसका। जब इसमें हम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो ये प्लांट जैसे रोजमेरी ड्राई हर्ब है, इसमें जब हम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो इसका रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर हम जो कल्टीवेशन करवा रहे हैं किसानों से, तो हमारा सजेशन यही रहता है कि कल्टीवेशन करने के बाद रॉ मटेरियल जो भी तैयार हो रहा है उसमें आप वैल्यू ऐड करिए। तो वैल्यू ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें पूरा ट्रेनिंग देते हैं, वैल्यू एडिशन का पूरा हम तरीका बताते हैं। और वैल्यू ऐड करने के बाद स्टार्टअप्स यहाँ किसानों के द्वारा, किसानों के ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है, और वो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। Yes, sir. Another question from Mala, that can you tell the labs where the standardization of these herbs is done? उसके लिए ये जो हर्ब्स हैं उस पे सीमैप भी स्टैंडर्ड्स बना रहा है, और इसके अलावा ये जो हर्ब्स हैं इस पे आयुष मंत्रालय और फसाई, इनके सबके कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, और वो मानक को पूरा करना होता है। और वो करने के बाद ही, जैसे अभी मैन्युफैक्चरर है कोई, उसके लिए फसाई ने पूरा इन हर्ब्स के लिए मानक बनाया हुआ है कि किसी भी तरीके का कोई इसमें माइक्रोबियल लोड नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की, जो भी ये मैं बता रहा था अभी अपने लेक्चर में, वो सारे के सारे फसाई ने सारे के सारे मानक बनाए हुए हैं। कुछ आयुष मंत्रालय भी स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। तो पूरा स्टैंडर्डाइजेशन है, और वो फॉलो अभी इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि तकनीकी जो जानकारी है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि नो डाउट ये सारा जितनी भी प्लांट में बता रहा हूँ इसकी सेकेंडरी नीड है। फ्रूट, वेजिटेबल और जो सीरियल क्रॉप होती है, इनकी डिमांड अपनी इंडिया में, कंजप्शन भी ज्यादा है और डिमांड भी इसकी ज्यादा है, तो इनकी खेती बहुत ज्यादा की जा रही है। अब क्योंकि ये जो हर्ब्स है इनकी खेती अभी, ये पौधे नए हैं, इनकी खेती बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, तो अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन किसानों के पास नहीं है, उन्हें नहीं पता होता है कि कैसे उगाना है, कैसे इसे काटना है, कैसे सुखाना है। तो उसके लिए टाइम टाइम पे सीमैप लगातार यहाँ पे किसानों को अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से लगातार बता रहा है, जागरूक कर रहा है, और अभी निरंतर लगातार खेती, इसकी क्षेत्रफल लगातार बढ़ता चला जा रहा है इनका। The another question is from Nepal, sir. Vivek Sodhari is there. He is asking that is a hilly area only suitable for these herbs? हिली एरिया, जैसे मैंने बताया कि ये जितने भी प्लांट हैं टेम्परेट रीजन के प्लांट हैं, स्नोफॉल अगर होता है तो वहाँ लेवेंडर, रोजमेरी बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। मैंने बताया कि जब बहुत ज्यादा सीवियर स्नोफॉल है तो उसे कैसे बचाना है। इसके अलावा इन्हें मिड हिल्स में भी लगाया जा सकता है, फुट हिल्स में भी लगाया जा सकता है, और फुट हिल्स के आसपास तराई बेल्ट जो होता है वहाँ वहाँ पे भी आसानी से इसे ग्रो किया जा सकता है। तो ये जितने भी प्लांट मैंने बताए हिली एरिया में, हमारे यहाँ इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, साउथ की जो बेल्ट है हिली एरिया वाली, वहां पे इन्हें आसानी से ग्रो किया जा रहा है। Yes, I think this was the last question, and you really explained them very well. And thank you very much, sir, for your valuable information. I hope all the participants had gained a lot of knowledge from you, no doubt. Thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Yeah. अगेन Now कांग्रेचुलेशन I would टू like to ऑल invite. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Now I would like to invite
are the climax, or the next, we can say, uh, uh, the person, Dr. Jitendra Mehta, President AFTEFS, for delivering the vote of thanks, because of it was the last lecture, and this is the climax of the workshop. So over to you, Dr. Jitendra sir. Thank you, Dr. Krishna. Thank you, Dr. Krishnendra, to provide me an opportunity to express my words in front of all. Many people have made unprecedented contribution in the successful editing of the 3 days international workshop cum training program on agripreneurship opportunities and current challenges, which started from 20th November, and I feel very happy to thank them. In this series, Dr. Jitendra Mehta, first thankful to the patron of AFTEFS Society, Professor Dr. Sushila Man, NAS Fellow Luas Hisar, under whose leadership this organization is working. Your words are always a blessing for us. I thank the chairman of the organization, Dr. Baljit Singh Saran of CCS Haryana Agriculture University Hisar, whose guidance we get at every step, through which we were able to reach this position today. And we hope that we will continue to get your guidance in the future also. I am grateful from the bottom of my heart to the organizing secretary of this workshop, Dr. Sanjay Swami, Central Agriculture University, Meghalaya, with whose point-to-point guidance we were able to easily overcome all the obstacles in this workshop. I express my gratitude to the convener of the workshop, Dr. Prince, CCS Haryana Agriculture University, Hisar, who's provide unique support in channelizing the entire program. I warmly thank my friend and strong pillar of the team, Dr. Krishnan Singh Nama, Vice President of AFTEFS Society and course coordinator of this workshop, whose support me outwriting in every aspect of this workshop, from conceptualizing it to implementing it. I am grateful to all the members of the advisory committee of this workshop, co-organizing secretary, all the members of the organizing committee, advisory secretary, and senior technical officer who's fully supported us in making this program successful. I am grateful to all those highly knowledgeable speakers of this workshop who's on the basis of their grassroots knowledge helped in improving the knowledge of all our participants. Very thanks to speakers of first day, Dr. Baljit Singh Saran, Dr. Pumi De Abesundra, Dr. Sanjay Swami, Dr. Birender Kumar. Speakers of second day, Dr. Dilfuza Zamborova, Dr. Satish Kumar, Dr. Dipendra Kumar, and speakers of third day, Dr. S.P. Vistasar, Dr. Manisha Shyam, Dr. R.P. Divakar, and Praval sir. In the end, I am extremely grateful to all of you participants, without whose this workshop was not only incomplete but also impossible. You all attend the sessions with great patience and benefited all of us through your questions. I hope you will participate in our upcoming activities and events also. Now, I invite my colleagues, Dr. Krishnendra, to now
added the last phase of this workshop. Thank you. Krishna sir. Thank you very much, Dr. Jiten sir. There is no doubt that AFTEFS has a long list of the efforts in successfully organizing this event. I would like to inform you all that our society is committed to reach uh, the latest dimensions of research to every mind. In this context, we are considering organizing online and offline workshops, training programs, and conferences in the coming time. I would like to tell you that during the session 2024, it means in the next year, under the guidance of our pioneers, we will first organize a 10-day, then 15-day and 21-day international workshop through the society, and also an offline conference at the suitable destination in the year 2024. A faculty training program has also been planned during this time. I would like that with the same enthusiasm with which you participated in this 3-day workshop, you all will become participant in our upcoming activities. I salute all the efforts and people who made this event possible. Kudos to all the knowledgeable speakers who brought science to the level of the listener's mind with their infinite knowledge. Thanks to my friend Dr. Jitendra Mehta, who supported me at every step in the conducting this course smoothly for the last 1 month. Thanks to our all hardworking organizers like Dr. Baljit Saharan, Dr. Swami, Dr. Satish, and Dr. Prince, whose guidance was received at every step. And I am sure you will continue to guide us in the same manner. I'm grateful to Miss Himani Gautam and Akrati Singh, who were effectively organized this entire workshop for 3 days. She very well maintained and rapport between the speakers and the participants. And finally, many thanks to all the participants who listened to our speakers with complete patience and attention for their days. I hope that these sessions would have been helpful in upgrading your current knowledge. So the last announcement for the participants that your e-certificate and hard-bound certificates will be sent to the email ID and postal address provided by you by the next week at least. Email IDs has been mentioned wrongly by some candidates, hence they may face problem in sending the certificate, but it will be resolved by contacting them personally. I hope that we have been successful in conveying the message of agripreneurship to some extent, and I apologize for all the technical errors during the session. Now I request you all that please on your videos for a while so we can take a screenshot. Will you please? Wonderful. Okay. Can I? share my, I can try. Yeah. Thank you so much. Thanks a lot to all of and with this I officially announce the end of this workshop course. Thank you very much. Thanks to all of you. Thank you so much. Hope to join you soon with you all in the some other event of the Vital Biotech and AFTEFS Society. Have a great evening. Thanks a lot.